So, good morning to all of you. Again, welcome to that training session. Today's session is related to evolution board. Is very important to that 5G lab. This is use cases and all. So, I hope this session will be very like radio part and again 5G core part. The 5G evolution board is very important for this 5G lab. So today our session will be taken by Mr. Abhishek. He is a part of our hardware team and he is a part of our installation team also. So any questions related to this can be asked directly or in the public chat. So I welcome you again all. Yeah, yeah, yeah. Good morning to all of you. My name is Abhishek Kumar. Here I am here to present the presentation for the 5G evolution board. Let's start. First thing, 5G evolution board, which is also known as Coral Anvo. तो बेसिकली हम इंडेक्सिंग पे आते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है, इस चीज़ में हम क्या बताएंगे कि कोरल सबसे पहले इंडेक्स क्या है, स्टेप टू स्टार्ट द कोरल अनुभव कि कोरल अनुभव को कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर टू स्टार्ट द कोरल अनुभव। देन सेकंड, बेसिक कन्फिगरेशन ऑफ कोरल अनुभव कि कोरल अनुभव को कैसे कन्फिगर करेंगे जिससे कि वो 5G कोर से कनेक्ट हो जाए और आपको एक यूई की सारी फैसिलिटी मिलती है। थर्ड थिंग इज स्टेप टू एक्सेस कोरल अनुभव विथ मोबा एक्सटर्न। आपको अगर कोई कन्फिगरेशन चेंज करनी तो आप मोबा एक्सटर्न के थ्रू कोरल अनुभव को कैसे एक्सेस करोगे। एंड द फोर्थ थिंग इज इंट्रोडक्शन टू 80 कमांड्स। बेसिकली 80 कमांड्स आर फॉर द मॉडर्न कन्फिगरेशन, तो हम 80 कमांड्स कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बताएंगे। फिफ्थ थिंग इज configuration of Coral Anvo for the registration purpose कि how we define the APNs, and sixth thing is use case of Coral Anvo, what are the use cases we develop, and last thing is troubleshooting of Coral Anvo. So let's start one by one. So basically here he will show the basic configuration of evolution board. And again, there is how to access this board. I mean, there is CLA, CLA is there. So that is mobile XTM is there, XTM is there. And again, how that commands can be executed on the particular device. So that is 80 commands only. And how the configuration can be done in the evolution board for 5G registration and all. Next step is for the use cases and how we can any problems related to Coral and how it is registered or not, how to see that logs, SMF log and AMF log in that 5G code. So this is these things can be viewed in the troubleshooting session of Coral and Go. So let us continue with the session. तो स्टेप टू स्टार्ट द एवोल्यूशन बोर्ड। सबसे पहली बात, हम एक सिम डालेंगे, insert the private 5G SIM in the evolution board which is given by Coral. There is a 5-volt adapter. Please power up the evolution board. There is a reset button. So press the reset button 3 to 5 seconds to on the modem. Power up the modem. Wait for 15 seconds for the board boot up. Basically, if any board is boot up, it will take some time. In evolution board, it is 15 seconds. Install the appropriate drivers on the computer. तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी कंप्यूटर से आप यूज करना चाहते हो, सीरियल कंसोल के लिए आपको कुछ यूएसबी ड्राइवर्स की आवश्यकता पड़ती है। उस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंडेड है कि आप ड्राइवर बूस्टर का यूज़ करो। उससे क्या, वो ड्राइवर बूस्टर की सहायता से आप जितने भी यूएसबी ड्राइवर हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। खासकर इसमें RG520 ऐप मॉडेम लगा है जो स्नैपड्रैगन X65 को सपोर्ट करता है। अब इसके अलावा ये कौन से 80 पोर्ट पे आता है, तो उसके लिए हम डिवाइस मैनेजर ओपन करके उसमें देख सकते हैं। तो इसके बाद आप एक्सेस ले सकते हो। So when you take this evolution board in your hand, no, there is left side and right side and front view. There is in front view we can see that communication port will be there and your USB connection will be there. Again, your reset button is there. Reset button that Abhishek explain you that it has to 3 to 5 seconds we have to reset the button. So there is a USB port there, and again left side you can see that SIM insertion point is that you can insert two SIMs over there. So there is an audio jack also in the left side, and right side you can see the USB port, and again you can see that SD card slot also. So he will The right continue.
The right side USB port is the main port which is used for AT commands. This is the AT port and anemia port. Basic configuration of evolution board. Basically when you open the device manager, you will see the ports. ये पोर्ट आपको तभी दिखाई देंगे जब आप इसके रिक्वायर्ड ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लोगे. बेसिकली आपके ड्राइवर मैनेजर में पोर्ट्स का एक कॉलम आता है जिसके अंदर आपको एटी पोर्ट, डीएम पोर्ट, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एनीमिया पोर्ट, ये 3 पोर्ट आते हैं. एटी पोर्ट की सहायता से आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एनीमिया पोर्ट की सहायता से आपको जीपीएस का डेटा दिखाई देता है. डीएम पोर्ट मैनेजमेंट लेवल के यूज करते हैं. इस So he's talking about when you are connected this device to Windows PC, then you can see this from the device manager. After installing that driver and all, you will able to see these ports, which ports we are going to connect and all. Okay. Next thing is MOBA Extern. MOBA Extern is open source serial console software. You can use any serial console software for the access of evaluation board like Putty, Minicom, SOCAT, etc. MOBA term is a GUI based, so it is very useful and user defined, User friendly. user friendly. Step to access the Coral Enva with MOBA Extern. हाँ, जब आप मोबाइल एक्सटर्म को इंस्टॉल कर लेते हो तो सबसे पहले क्या है, एवोल्यूशन बोर्ड को आपको यूएसबी केबल के थ्रू अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है. उसके बाद आप डिवाइस मैनेजर में पोर्ट सेलेक्ट करते हो. इसके अलावा आप मोबाइल एक्सटर्म सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उसमें एक सेशन का टैब आता है. So in between, Abhishek, there are two USB ports we can see in that particular device. So which USB we can connect on this particular action? हाँ, 80 पोर्ट विच इज इन प्रीवियस स्लाइड लाइक COM21. Is in the front side or in the right Right side of. Right side. Right So side. that device have two USB ports. Then one is in the front end and one is in the right side. So you have to connect the device in that right side of that. The main 80 port. The front USB port is for the debugging. When you connect with mobile extern, you open the session tab. There is a serial connection tab. Please select the appropriate AT port, then select the baud rate 115200. After that, okay, you get the access of Coral Enva. For basic information, you can type the ATI commands for the manufacturer details. As all of you know how to configure in that putty or that mobile stream. So there is a we have to mention the baud rate there. That is 1155200, and already we selected that COM from the device manager. So accordingly, you can communicate with the device. There are two or three options he told about. One is putty, and second one is mobile stream. One more Third is Minicom. Minicom. Fourth is SOCAT. These utilities you can use for to communicate with the device. All are open source. You can use it. Here is the basic front view of the mobile extern application. The left corner is for the session. When you click on the session, you got the second page where you click on serial, where you select the serial port, basically 80 port, and the speed, which is your baud rate. After select the baud rate, you can click on OK button. Introduction to AT commands. हाँ, here I am explaining what are the AT commands. बेसिकली आपके किसी भी मॉडर्न को कॉन्फ़िगर करने के लिए AT कमांड्स यूज की जाती हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है अटेंशन कमांड्स. अटेंशन कमांड्स की सहायता से आप मॉडर्न की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. सबसे पहला अगर हम देखें तो हमें टेस्ट कमांड की सहायता से हम ये जानते हैं कि जो भी AT कमांड अवेलेबल है उसके लिए क्या पैरामीटर्स और क्या वैल्यू डिफाइन की जा सकती है. जैसे हमने एक सिंटैक्स दिया है, बेसिकली जो सिंटैक्स है AT प्लस कमांड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अगर आप कोई भी कमांड यूज करते हो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, AT प्लस CGD CONT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बेसिकली ये क्या है, जो भी आपकी APN डिफाइन है, या APN आप किस प्रोटोकॉल पे IPv4 v6 वर्जन या IPv4 वर्जन पे और किस APN नेम से आप डिफाइन करना चाहते हो, उसकी एक वैल्यू आपको निकल आएगी. वैल्यू आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी.
जो कि मैं अभी एग्जांपल लेके आपको कॉन्फ़िगर करके कुछ देर बाद दिखाऊंगा रियल टाइम पे। एंड सेकंड इज रीड कमांड। रीड कमांड का यूज हम तब करते हैं जब हमें करंट वैल्यू जाननी है, जैसे कि हमारा कौन सा आईपीएन सेट है, हमारे सिम की इमसी क्या है, हमारी आईपी एड्रेस इस समय क्या है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें दो आईपी एड्रेस मिलेगी, एक फॉर आईएमएस एंड सेकंड फॉर इंटरनेट। तो उसकी अगर हमें करंट वैल्यू डालनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट करंट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम रीड कमांड यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसके लिए हम सिंटैक्स क्या यूज़ करते हैं, एटी प्लस कमांड इक्वल क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। कमांड के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमें उस कमांड की जो करंट वैल्यू होगी, जो करंट स्टेटस होगी, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। So the same thing what Abhishek explained, that AT command is for attention commands only. So evolution board for communication modules often exposed to an interface, usually that UART, USB or SPI, and it allows a user to send these commands to test and interact with the module's functionality. So you will continue. थर्ड थिंग इज राइट कमांड। इस कमांड की सहायता से आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई वैल्यू आपको असाइन करनी है तो आप उसके लिए राइट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें आप कमांड के बाद रिक्वायर्ड पैरामीटर वैल्यू देते हैं। अब वो वैल्यू कौन कौन सी आप दे सकते हो, आप टेस्ट कमांड की सहायता से जान सकते हैं। और अगर आपका वैल्यू असाइन हो जाती है तो रिस्पॉन्स आपको ओके आएगा, नहीं तो वो एरर सेट करेगा अगर आपने कोई पैरामीटर वैल्यू अगर गलत असाइन कर दी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, बेसिक एटी कमांड्स हैं ये। बेसिकली एटीआई, बेसिकली ये यूज होती है रिटर्न द मॉडल नंबर एंड फर्मवेयर वर्जन। बेसिकली कि आपके एवोल्यूशन बोर्ड का मॉडल नंबर क्या है, फर्मवेयर वर्जन क्या है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा चल रहा है। सेकंड कमांड इज एटी प्लस सी आई एम आई, बेसिकली यूज फॉर फाइंडिंग द इमसी नंबर विच इज इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आईडी। बेसिकली आपकी सिम के जो 16 डिजिट के नंबर होते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। 80 plus COPS equal to question mark. Basically ये display list of available networks. Check if network 00101 is available. Basically it is a test element. तो आपको जो भी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन जानने हैं उसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। बेसिक नेटवर्क कमांड यही है। फोर्थ इज 80 plus cfun equal to 0 if the switch UE to minimum functionality। अगर आपको यूई की फंक्शनैलिटी को मिनिमम स्टेट में ले जाना है, बेसिकली ऑन ऑफ प्रोसीजर आप कह सकते हो, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। जब आप जीरो करोगे तो सारी फंक्शनैलिटी ऑफ हो जाएंगी, जब आप वन करोगे तो मॉडेम अपनी सारी फंक्शनैलिटी ऑन कर देगा। सारी फंक्शनैलिटी का मतलब आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन से है, यानी नेटवर्किंग से है, प्रोसेसेस से है, एक्सेट्रा। Again, what are the these commands are shown here, no? That is 80 commands, 80 plus CIMI. So these commands we will explain you in with connect with our device also. So these are shown in practically also. Okay. द थर्ड लास्ट सेकंड इज 80 प्लस CGD CONT क्वेश्चन मार्क। बेसिकली हम यहाँ पे रीड कमांड का यूज कर रहे हैं कि करंट वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एपीएंस, चेक एपीएन कॉन्फ़िगरेशन एज पर नेटवर्क स्लाइस। तो इस कमांड की सहायता से बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट किया है वो एपीएन आपको शो हो जाएगा। अगर द लास्ट कमांड इज 80 प्लस CGD काउंट इक्वल टू 1 कॉमा डबल कोट में आईपी कॉमा डबल कोट में एपीएन है, इस ये बेसिकली इट इज अ राइट कमांड टू राइट एन एपीएन। आप कोई भी आप अपना एपीएन डिफाइन कर सकते हो इसकी सहायता से। इसके अलावा और भी 80 कमांड्स हैं जिसके डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं। हाँ, द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोरल अल्फा फॉर 5G रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, कैसे आप एटी कमांड की सहायता से अपने मॉडेम को आप रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, सेट द नेटवर्क मोड प्रेफरेंस टू NR5G। बेसिकली ये एक 5G एवोल्यूशन बोर्ड है, आप इसको 5G पे रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले इसका मोड प्रेफर करेंगे कि ये 5G पे लैच हो या 4G पे, क्योंकि ये 4G की भी फंक्शनैलिटी रखता है, पर ऑल द लैब्स आर 5G। तो आप पहले मोड प्रेफर करोगे NR5G, न्यू रेडियो 5G। इसके बाद आप द सेकंड स्टेप इज सेट द एपीएन फॉर डेटा कनेक्शन। बेसिकली एपीएन आप डिफाइन करोगे, जैसे कोरल के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा एपीएन इंटरनेट है,
तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, AT प्लस CGD CONT इक्वल टू 1, कॉमा, डबल कोट में IP, कॉमा, डबल कोट में APN नेम। APN नेम में आप क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में इंटरनेट। इसके बाद आप एंटर दबाओगे, आपका APN सेट हो जाएगा। आप APN सेट क्या APN करंटली सेट है ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, AT प्लस CGD CONT इक्वल क्वेश्चन मार्क, not use equal to, only use question mark to read the current value of APN. The third step is the set the operator selection on automatic mode. Basically operator selection automatic mode का मीन्स ये है कि ये ऑटोमेटिक एक ऑपरेटर सिलेक्ट कर ले। द फोर्थ स्टेप इज रीलोड द 5G एवोल्यूशन बोर्ड। बेसिकली आप यूई की फंक्शनैलिटी को मिनिमम स्टेट में ले जाते हो, फिर मैक्सिमम स्टेट में लाते हो, जिससे कि वो नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रोसीजर है आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप अपना कोई अनदर एपीएन लाते हो तो एपीएन नेम आप चेंज करके उस सिम को भी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आप कल अपने यहाँ अपने से खुद से डेवलप करते हो एक कोड, और उसके लिए आप एक खुद का एक एपीएन डिफाइन करते हो, या आप एनसीएक्स के लिए यूज करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसकी सहायता से अपना सिम रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप एक अपना प्राइवेट सिम या प्राइवेट कोड बनाते हो उस चीज़ को, बेसिकली आप इसकी सहायता से काफ़ी चीज़ें रिसर्च के लिए अलग अलग कोर्स की सहायता से अलग अलग एपीएन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपने एपीएन का नेम चेंज कर दिया है तो नेक्स्ट एपीएन जो आपने डिफाइन किया उसकी सहायता से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज रास्पबेरी पाई यूज केस विथ कोरल अनुभव। कि कोरल अनुभव को रास्पबेरी पाई की सहायता से, मतलब रास्पबेरी पाई की सहायता से इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। This use this use case explore the practical application of automating the configuration of 5G evaluation board using basic script of Raspberry Pi. बेसिकली आप रास्पबेरी पाई में क्या है, एक आप ओएस डालोगे, कोई भी लिनक्स वेरिएंट या डेबियन वेरिएंट का ओएस डाल के इसको आप यूज केस के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या है, अभी तक क्या है, आपको एवोल्यूशन बोर्ड को कभी भी ऑटोमेट करने के लिए एक पर्सन की जरूरत है जो लैपटॉप की सहायता से उसकी कन्फिगरेशन चेंज कर सके। पर हम बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू एवोल्यूशन बोर्ड में कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स या प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स पड़ेंगी। सबसे पहले एक रास्पबेरी पाई चाहिए जो यूएसबी सपोर्ट हो। बेसिकली रास्पबेरी पाई के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं जिनमें यूएसबी 1 होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं, टाइप सी होती हैं, टाइप ए होती हैं, एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग इज 5G एवोल्यूशन बोर्ड, एक सिम कार्ड चाहिए आपको। हाँ, फोर्थ थिंग इज मिनीकॉम और अनदर सीरियल कम्युनिकेशन टूल। बेसिकली अभी तक क्या है, आप मोबाइल एक्सटर्न की सहायता से एवोल्यूशन बोर्ड पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, पर आप जब कोई एक CLI बेस्ड ओएस डिप्लॉय करते हो किसी भी रास्पबेरी पाई में, तो उस पे आप GUI की सर्विसेज नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको मिनीकॉम, जो बेसिकली CLI सपोर्ट सीरियल कंसोल सॉफ्टवेयर है, तो उसकी सहायता से आप इसमें एक्सेस लेके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो बेसिकली हम मिनीकॉम का यूज करेंगे बैश और ऑटोमेशन के लिए। इसके अलावा USB टू सीरियल ड्राइवर्स इंस्टॉल, जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। बेसिकली आप जब कोई भी लिनक्स वेरिएंट डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे आपके, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सेटअप इंस्ट्रक्शन। हाँ, बेसिकली इस स्टेप में क्या है कि आप कोरल मतलब रास्पबेरी पाई का एक्सेस लोगे। उसके लिए आप जो भी यूजर नेम, पासवर्ड और IP डिफाइन करो उसके थ्रू आप एक्सेस लोगे। इसके अलावा आप एक रूट यूजर बनोगे, बेसिकली जिससे कि आपके पास सारे राइट्स आ जाए। उसके अलावा आप USB केबल, So the sudo chmod command is a Linux command हाँ which is using to give the rights for the particular. हाँ, becoming the root user. Okay, fine. When you access anything, you are a normal user. After using the command sudo space -i, you will become a root user. Yeah, there is a query come from Sharik AMU. How to connect sensor board with the evolution board? Yes. Can I explain here? Yeah, after that. Yeah, we will explain it later. I mean, just complete the slides and we'll come back to that point. हाँ, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप इज चेक डिवाइस पाथ। बेसिकली आप जब रास्पबेरी पाई को कोरल अनुभव से कनेक्ट करते हो तो वो एक USB इंटरफेस पे कनेक्ट होता है। तो वो उसने कौन सा इंटरफेस यूज किया USB का 1 2 0, तो आप ls कमांड है ये ls स्पेस dev/tty USB स्टार। बेसिकली आप लिस्ट आउट करते हो
कि यूएसबी पे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई है। इसके अलावा इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, ये पैकेजेस वो हैं जो मैंने मिनीकॉम बताया या सोकैट बताया। तो बेसिकली सूडो ऐप्ट अपडेट की सहायता से आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे दो कमांड है, सूडो ऐप्ट अपडेट। बेसिकली ये पहले जो भी ओएस है उसको अपडेट करेगा, उसके अलावा सूडो ऐप्ट इंस्टॉल -y सोकैट, ये सोकैट कमांड इंस्टॉल करने के लिए आप मिनीकॉम भी यूज कर सकते हो, सोकैट भी यूज कर सकते हो। बोथ आर द सीरियल कंसोल सॉफ्टवेयर। ग्रांट यूएसबी परमिशन, हाँ, बेसिकली यूएसबी के एक्सेस करने के लिए आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं और यूएसबी को आपने कौन से राइट्स दिए हैं। क्योंकि आप जब बैश ऑटोमेशन करोगे तो आप जरूरी नहीं कि हर बार रूट यूजर बनो, आप नॉर्मल यूजर से भी बैश स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूएसबी को परमिशन दोगे कि जो भी यूएसबी कनेक्ट होंगी उनको उस इंटरफेस पे क्या परमिशन दो। बेसिकली इसमें एक कमांड है chmod 777/dev/tty USB स्टार। तो chmod क्या होता है, चेंज मॉडिफिकेशन, जिसमें आप 777 का मतलब ये है कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन दे रहे हो, नॉर्मल यूजर के लिए, ग्रुप यूजर के लिए एंड अदर्स के लिए। इफ अनदर पर्सन हु इज एक्सेस दिस रास्पबेरी पाई। हाँ, बेसिकली ये 777 ये बने कैसे मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट 7 है वो यूज होता है आपके यूजर के लिए। जैसे आप कोई भी सिस्टम एक्सेस लेते हो तो आपका एक नॉर्मल यूजर होता है। तो इसमें 7 कैसे बनता है, फोर फोर इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, 4 फॉर रीड, 2 फॉर राइट एंड 1 फॉर एग्जीक्यूट, द होल सम इज 7। इफ द इट स्टार्ट 477, तो इट्स ओनली रीड permission for the user and read write execute permission for the group, read write execute permission for the others। okay, next, बैश स्क्रिप्ट फॉर द मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, आप एक बैश स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इसके लिए क्या है, आप एक एसएच की फाइल बनाते हो, मतलब एसएच एक्सटेंशन की फाइल बनाते हो। आपने लिख लिया जैसे usecase.sh, तो आप एक्सेस लेके आप जो भी एडिटर यूज करो, चाहे जी एडिट यूज करो, विम यूज करो या विम डॉट टीनी यूज करो, टाइनी, तो उसकी सहायता से सबसे पहले एक आप फाइल बनाओगे। फाइल आप टच कमांड की सहायता से भी बना सकते हैं। तो उस कमांड को बनाने के बाद, मतलब उस फाइल को क्रिएट करने के बाद, आपको कैसे उस फाइल को राइट करना है, बैश कमांड्स कैसे यूज करनी है, जिससे कि आप एक बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू कोड अनुभव को ऑटोमेट कर सको। जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसको बोलते हैं सी बैंग लाइन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप पार्ट डिफाइन करते हो कि कौन सा सेल उसे यूज करना है। बेसिकली सेल्स भी कई टाइप के होते हैं, के सेल, बैश सेल, एस एच सेल, सी सेल। तो कई सेल होते हैं, आपके ओएस डिपेंडेंट होते हैं कि आपके ओएस में कौन सा सेल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। तो जैसे हमारे में बैश इंस्टॉल है, हमने उबंटू 20 यूज किया है, तो आप उसकी सहायता से बैश की सहायता करोगे। तो बैश का जो पाथ होता है, बैश की जो बाइनरी का पाथ होता है वो होता है /bin/bash, मतलब बैश। तो उसकी सहायता से आप सबसे पहली लाइन जो सीबैंग लाइन होती है उसकी सहायता से आप पार्ट डिफाइन करोगे। उसके बाद आप अपने कमांड्स यूज करोगे, बैश कमांड्स, जो टर्मिनल कमांड्स होती हैं उन कमांड्स को आप यूज करोगे। इफ द कमांड इज ओके, सबसे पहली लाइन जो है, इफ एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस कमांड स्पेस -v सो कैट एंड ग्रेटर एन /dev/null। तो इस कमांड की सहायता से आप क्या चेक करते हो कि आपके रास्पबेरी पाई में सो कैट जो सीरियल कंसोल सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है कि नहीं। क्योंकि हमें सीरियल एक्सेस लेने के लिए कोई सीरियल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहले हम बैश स्क्रिप्टिंग में ये चेक करते हैं कि जिस भी हमने रास्पबेरी पाई पे, मान लीजिए हमारे पास अलग अलग रास्पबेरी पाई है, तो किस में इंस्टॉल है किस में नहीं है, मतलब हम कहीं भी ऑटोमेट करने के लिए किसी भी रास्पबेरी पाई में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं। अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो हमारी आगे की कमांड कोई भी काम नहीं करेंगे, बेसिकली 80 कमांड्स। इसके अलावा हम अपडेट चेक करेंगे कि रास्पबेरी पाई हमारा अपडेटेड है कि नहीं। जो भी उसके सिक्योरिटी ड्राइवर्स हैं, जो भी उसके लिनक्स के ड्राइवर्स हैं, जो भी उसके ग्राफिक्स के ड्राइवर्स हैं या वायरलेस के ड्राइवर्स हैं, वो अपडेटेड हैं कि नहीं, या यूएसबी के ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं। अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो इसके बाद एल्स कंडीशन पे वो जाएगा, जिसमें यह है कि स्क्रिप्ट इज स्टार्टेड आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप कमांड्स दोगे। जैसे सबसे पहली कमांड क्या की, इको, इको ATI
socat space hyphen slash dev slash tty usb2 crnl greater than temp slash hello। बेसिकली इस कमांड्स का मतलब क्या है, इको कमांड होती है प्रिंट करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर आपको टर्मिनल पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए इको कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड यूज की गई है इको की सहायता से ATI, जो पहले एटी कमांड है, उसमें सोकैट का यूज किया गया, सोकैट सीरियल कंसोल सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से USB2, बेसिकली USB2 जो है हमारा स्लैश डेव स्लैश TTY USB2 जो है वो हमारा क्या है, 80 पोर्ट होगा, क्योंकि हम जो भी कमांड चलाएंगे 80 के लिए वो 80 पोर्ट पे ही चलाएंगे। तो यहाँ पे जो कमांड यूज की गई है वो स्लैश डेव स्लैश TTY USB2 पे यूज की गई। फिर ये एक हेलो डायरेक्टरी में उन्होंने बना दिया, टेम्प के अंदर एक हेलो फाइल बना के उसमें उसका आउटपुट डाल दिया। बेसिकली ये केवल कंफर्मेशन के लिए होती है। द सेकेंड कमांड इज फॉर द see the CIMA, there is a some change. You can use capital letter. We prefer to use capital letters for the AT commands. The small letter also work, but we prefer use capital letters. Second command is AT plus CIMI, CIMI for the find the value of MC number. And the third thing is AT plus Q and W CFG. Basically ये नेटवर्किंग कमांड है फॉर कन्फिग्रेशन, कि अगर आपको कोई कन्फिग्रेशन चेंज करनी है तो इसमें इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है। तो बेसिकली एक ये रीड कमांड है जिसकी सहायता से हम जो नेटवर्क की कन्फिग्रेशन वैल्यू है उसके जो भी अवेलेबल पैरामीटर और वैल्यू उसको रीड करने के लिए। एंड व्हेन यू वांट टू अपेंड द आउटपुट, हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपने कोई कन्फिग्रेशन चेंज की या कोई वैल्यू रीड की, आप उसको किसी फाइल में सेव करना चाहते हो, क्योंकि ऑटोमेट तो हो रहा है आपका, पर आप बाद में रीड करना चाहो रिसर्च पर्सपेक्टिव से कि किस समय क्या वैल्यू थी, तो कितनी स्टेटस RSRQ कितनी आई, RSRP कितनी थी, सिग्नलिंग सही थी कि नहीं, इंटरनेट अवेलेबल था कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि रियल टाइम पे किस चीज़ की क्या वैल्यू थी, तो आप उसे एक फाइल में सेव करोगे। जब आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो कि किस समय क्या कन्फिग्रेशन थी, क्या चीज़ें आपने ऑटोमेट की, उससे क्या चीज़ें इफेक्ट पड़ा, सिग्नलिंग कितनी चेंज हुई, कौन कौन से एंटीनाज यूज हुए, एक्सेट्रा। तो सबसे हाँ, मैं ये डिफाइन करता हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन दिख रही है 1 मिनट में हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, वेट, हाँ, इको स्पेस AT प्लस Q&W CFG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोकैट हाइफन स्लैश डेव स्लैश TTY USB2 कॉमा CRNL ग्रेटर देन, हाँ, ये जो 2 बार ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, बेसिकली ये क्या है, अपेंड कमांड होती है। लिनक्स में से अपेंड कमांड बोलते हैं। इसकी सहायता से आप कोई भी चीज़ जो टर्मिनल पे लिख रहे हो उसको अपेंड कर सकते हो किसी भी फाइल में, किसी भी टर्मिनल पे। तो इसके आगे हमने फाइल का पार्ट डिफाइन किया है कि टेम्परेरी फोल्डर में एक फाइल है output.txt। तो जो भी AT प्लस Q&W CFG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का जो भी आउटपुट आएगा वो सारे आउटपुट कहाँ पे सेव होंगे, टेम्परेरी डायरेक्टर के अंदर एक output.txt नाम की फाइल है, उसमें सारी कन्फिग्रेशन जो उसकी प्री डिफाइंड या पैरामीटर्स वैल्यू हैं वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। इसकी सहायता से आप चाहोगे तो मल्टीपल कमांड्स के जो भी आउटपुट होंगे उनको आप अपेंड कर सकते हो, आप मल्टीपल फाइल भी यूज कर सकते हो। जैसे आप इस कमांड के अलावा दूसरी कमांड यूज करके आप output.txt है, आप वो output1.txt में सेव कर सकते हो। जैसे आपको APN की डिटेल्स जाननी है तो आप क्या राइट करोगे, इको स्पेस AT प्लस CGD CONT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोकैट स्लैश डेव स्लैश TTY USB2 कॉमा CRNL append command slash temp slash the file name which you are defined, like output2 output3 dot txt or output dot log, etc. You can use any extension for the file. If you want to do something new like ini or YAML file, it's your choice. For the print the file and terminal, हाँ, the next thing is कि if you want to save in file and also print on the terminal, echo ATI socket, हाँ, बेसिकली इसमें इको ATI सोकैट स्लैश डेव स्लैश TTY USB CRNL T स्लैश टेम्प स्लैश हेलो,
बेसिकली क्या है, आप जो भी चीज़ें फाइल में सेव हो रही है उसको आउटपुट में भी शो करना चाह रहे हो बेसिकली टर्मिनल पे। तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज करेंगे। आप बहुत सारी कमांड्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी फाइलें यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूजर लेवल पे कोई चीज़ ऐसे डिफाइन नहीं है कि आप कितनी फाइलें यूज कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड फाइल यूज कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को टर्मिनल पे आप एक वन एट अ टाइम टर्मिनल पे भी शो कर सकते हैं, और उसको फाइल में भी सेव कर सकते हैं, या डायरेक्ट फाइल में सेव कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसे आप कमांड लिखोगे वैसा आपका आउटपुट मिलेगा। हाँ, अब एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हो कि किसी फाइल में मैंने प्री डिफाइंड कमांड्स लिख दिए हैं, मैंने 10 कमांड लिख दी, आप चाहते हो कि वो उस फाइल से रीड करके तब उस कमांड को एवल्यूशन बोर्ड पे रन करे और उसके आउटपुट को किसी फाइल में सेव करे या टर्मिनल पे प्रिंट करे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर सबसे लास्ट लाइन जो लिखी है वो कैट स्पेस कमांड डॉट टी एक्स टी। इसमें क्या है, कमांड डॉट टी एक्स टी एक फाइल है जिसके अंदर हमने प्री डिफाइंड कुछ कमांड लिख दिए हैं, चाहे वो रीड के लिए, राइट के लिए या एग्जीक्यूट के लिए लिखे हो। तो वो कमांड लिखे हैं बेसिकली। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी कमांड्स हैं उसको एक अनदर फाइल से रीड कर रहे हैं। हमें जब भी कमांड चेंज करना हो कि हम उस फाइल में कमांड चेंज करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें बार बार स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कैट का यूज़ करके वो यूएसबी टूल पे कमांड चलाएगा जो बेसिकली हमारा एटी पोर्ट है। इसके अलावा टी कमांड की सहायता से हम उस आउटपुट को प्रिंट कर देंगे टर्मिनल पे। आप चाहो तो उसे एक फाइल में भी सेव कर सकते हो अपेंड कमांड की यूज करके। हाँ, अब बेसिकली आपने एक स्क्रिप्ट तो बना ली, अब उसको रन कैसे करना है, उसकी क्या परमिशन देनी है। तो रनिंग द स्क्रिप्ट में हम यही बताते हैं, मेक द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल एंड रन इट। यहाँ पे कमांड लिखिए सी एच मोड स्पेस प्लस एक्स, इसके बाद मॉडेम अंडर स्कोर कन्फिग डॉट एस एच। इस कमांड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस कमांड का मतलब है चेंज मॉडिफिकेशन। बेसिकली उसकी जो ऑनरशिप की जो राइट्स हैं, जो फाइल के राइट्स हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट है यूजर के लिए, अदर्स के लिए, ग्रुप के लिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जब हमने यूज किया सी एच मोड स्पेस प्लस एक्स, तो एक्स का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल है। तो जितने भी यूजर्स हैं सभी के लिए हमने एग्जीक्यूटेबल बना दी, किसकी, मॉडेम अंडर स्कोर कन्फिग डॉट एस एच। जो अभी हमने सारी बैश स्क्रिप्टिंग की जो भी कमांड्स लिखे थे वो इसी फाइल के अंदर लिखे थे। आप इसको अपन जो भी नाम चाहो वो दे सकते हो, पर आप प्रेफर करना है कि डॉट एस एच एक्सटेंशन ही, क्योंकि सेल स्क्रिप्टिंग या बैश स्क्रिप्टिंग के लिए डॉट एस एच एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आप इसे रन कैसे करोगे, जैसे अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो सूडो कमांड की सहायता से डॉट स्लैश और फाइल का नाम लिखोगे, ऑटोमेटिक एंटर करने पर वो रन कर जाएगी। अगर आप एक रूट यूजर हो तो आपको सूडो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डॉट स्लैश और फाइल के नाम की सहायता से आप उस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ सिस्टम डी सर्विस फॉर ऑटोमेशन। हाँ, बेसिकली क्या है कि आपने एक स्क्रिप्ट बना दी, आप स्क्रिप्ट चला दोगे, पर नेक्स्ट टाइम चाहोगे कि जब भी रास्पबेरी पाई ऑन हो ये कमांड्स ऑटोमेट हो जाए, यानी ये स्क्रिप्ट ऑटोमेट हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम सर्विस डिफाइन करते हैं कि अगर हमने इसे सर्विस का पार्ट बना दिया इस स्क्रिप्ट को, तो जब भी रास्पबेरी पाई चालू होगा ऑटोमेटिक ये कमांड चल जाएगी या ये वैसे स्क्रिप्ट रन कर जाएगी। सबसे पहले यूनिट यूनिट के अंदर आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हो कि क्या है 5G मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, जिस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो चीज़ हम डिफाइन कर देते हैं। आफ्टर द नेटवर्क डॉट टारगेट, नेटवर्किंग का टारगेट है। सर्विस में क्या है, एग्जीक्यूट स्टार्ट। सबसे मेन लाइन जो होती है वो सर्विस में डिफाइन है कि एग्जीक्यूट स्टार्ट, जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है वो कहाँ से होनी है। इसके लिए हमने बैश की बात बताई कि स्लैश बिन स्लैश बैश की सहायता से, और उसके बाद हमने फाइल का पाथ दिया कि फाइल कहाँ पे है। बेसिकली वो उसके फाइल की लोकेशन पे जाएगा तभी उस फाइल को रन कर सकता है। रीस्टार्ट ऑलवेज का मतलब ये है कि अगर कोई एरर आ जाता है स्क्रिप्टिंग में, मान लीजिए कि जब आपका रास्पबेरी पाई चालू हुआ उस समय कोरल अनुभव चालू नहीं था या 5G एवोल्यूशन बोर्ड चालू नहीं था, तो उस केस में क्या है, ये सर्विस रन करेगी और एरर आ जाएगा। पर जैसे ही कोरल अनुभव चालू होगा ये सर्विस दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्क्रिप्टिंग रन कर जाएगी। यूजर यूजर डिफाइन है रूट, तो ये जो स्क्रिप्ट है वो कौन यूजर रन कर रहा है, रूट यूजर रन कर रहा है। आप यहाँ पे यूजर डिफाइन करते हो, आप चाहो तो नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकते हो। बेसिकली हम प्रेफर करेंगे रूट यूजर करो, क्योंकि रूट यूजर के पास सारी एक्सेस होती है, सारी परमिशंस होती हैं फाइल के लिए। देन थर्ड थिंग इज इंस्टॉल वांटेड बाय मल्टी यूजर डॉट। बेसिकली ये जो सर्विस है वो कितने यूजर्स के लिए, तो मल्टीपल यूजर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं। अब इसके अलावा इस फाइल को आप सेव कहाँ करोगे, जो ये सर्विस की फाइल है
सर्विस की फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सर्विस। आप देखो इस जो जैसे हमने उबंटू 20 यूज किया था, तो उसमें जो सर्विस फाइल की जो लोकेशन होती है वो स्लैश etc के अंदर सिस्टम डी एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर एक सिस्टम डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हम अपनी फाइल सर्विस की सेव कराते हैं। तो आपको इस पाथ पे सेव कराना है। अगर आप उबंटू 20, उबंटू 18, उबंटू 22 यूज कर रहे हो या रास्पबेरी पाई का कोई डेविन वेरिएंट यूज कर रहे हो आप, चाहे वो फुल पेज ओएस हो, चाहे CLI बेस्ड हो, चाहे GUI बेस्ड हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, आपको इसी पाथ में मिल जाएंगे। इसके अलावा अब आपने सर्विस बना ली, इसके अलावा आप सारी सर्विसेज को पहले रीलोड करोगे। उसके अलावा एक जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ, सूडो सिस्टम ctl daemon हाइफन रीलोड है। तो इससे क्या होती है, आपने क्या किया, एक सर्विस की फाइल में चेंजेस किए, तो सारी सर्विसेज को पहले आप रीलोड करोगे, जितनी भी सर्विसेज चल रही होंगी। द सेकंड थिंग इज सूडो स्पेस सिस्टम ctl इनेबल स्पेस मॉडेम अंडरस्कोर config डॉट सर्विस। तो आप क्या करते हो, इस कमांड की सहायता से सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए बूटअप पे। जितनी बार भी आपका रास्पबेरी पाई चालू होगा, ये सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। इसके लिए हम इनेबल कमांड यूज करते हैं, जो कमांड लिखिए sudo स्पेस सिस्टम ctl इनेबल। दिस इनेबल कमांड्स यूज फॉर द ऑटोमेट द सर्विस फॉर द टाइम बिंग व्हेन द डिवाइस इज बूट अप। एंड द लास्ट थिंग इज sudo system ctl start modem underscore config dot service। इसमें क्या है, हम सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप जब एक बार सर्विस स्टार्ट कर दोगे, नेक्स्ट बूट पे ऑटोमेटिक वो स्टार्ट होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग ऑफ कोरल अनुभव, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ट्रबल शूटिंग, कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि लोग लोग क्या, कभी भी हम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं कि हमने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई तो दे दी, पर हमने रीसेट बटन नहीं ऑन किया, या रीसेट बटन को 3 से 5 सेकंड तक चालू नहीं किया, जिसकी सहायता से क्या होगा कि मॉडेम बूट नहीं हुआ, तो आपको 80 कमांड सुनी होगी। तो इसके लिए हमने क्या है, बेसिक चेक्स बनाए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हो हार्डवेयर लेवल पे, ड्राइवर लेवल पे, कमांड लेवल पे, कि चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। सबसे पहले पावर एंड हार्डवेयर कनेक्शन। तो हम ये चेक करते हैं कि सारे मतलब पावर कनेक्टर कनेक्टेड है कि नहीं, या पावर एडेप्टर प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं। एक इफ द एंटीना, हाँ, इसके अलावा बोर्ड में सारे एंटीना कनेक्टेड है कि नहीं। कि अगर सारे एंटीना कनेक्टेड नहीं होंगे तो डिफरेंट एंटीनास के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अगर वाईफाई का एंटीना कनेक्टेड नहीं है तो वाईफाई आपको शो नहीं होगा। इसके वाईफाई का SSID है QSoft AP। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसका यूज है। आप रास्पबेरी पाई से जो चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हो, अभी USB के थ्रू कर रहे थे। अगर आपको इंटरनेट चलाना है रास्पबेरी पाई पे, तो आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या USB पे भी इंटरनेट मिलता है उसके। ठीक है। वेरीफाई द सिम कार्ड इज इंसर्टेड करेक्टली। हाँ, बेसिकली इसमें 2 सिम स्लॉट हैं, तो किस सिम स्लॉट में आपने लगाया और किस स्लॉट को आपने एक्टिवेट किया है करेंटली, उस चीज़ के लिए है। सेकेंड थिंग इज ड्राइवर एंड फर्मवेयर वेरिफिकेशन। बेसिकली आप जिस भी PC से या लैपटॉप से इसे यूज कर रहे हो, उसमें सारे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, जो बेसिकली USB ड्राइवर्स हैं टू कम्युनिकेट विथ कोरल अनुभव, और आपके फर्मवेयर अपडेटेड है कि नहीं। तो बेसिकली आप अपने, अगर आपका लैपटॉप विंडोज़ का है तो उसे अप टू डेट रखें। हाँ, बेसिकली बॉड रेट, इसमें डिफ़ॉल्ट बॉड रेट जो है वो 115200 है। आप इस बॉड रेट को चेंज कर सकते हो, और हम प्रेफर करेंगे कि इसे आप चेंज ना करें, इसी बॉड रेट पे यूज करें। 80 कमांड्स इंटरफेस चेक। हाँ, बेसिकली जब आप एक्सेस ले लेते हो तो उसके बाद आपको एक ओपन टर्मिनल मिल जाता है। अब वो टर्मिनल ब्लैंक होता है। तो आप सबसे पहले 80 कमांड प्रेस करोगे, 80, फिर एंटर करोगे, तो आपको एक रिस्पॉन्स आएगा ओके और एरर। अगर ओके आता है तो मॉडेम विल वर्क प्रॉपरली। द सेकंड कमांड इज ATI फॉर गेट द मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन या मॉडल नंबर और फर्मवेयर वर्जन। तो बेसिकली हम ATI कमांड यूज करते हैं उसके लिए। थर्ड कमांड इज बेसिकली इट इज ऑल्सो फॉर द फर्मवेयर कमांड 80 प्लस CGMR। डिबगिंग लॉग्स, हाँ, बेसिकली शुरुआत में बातचीत हो रही थी कि जो फ्रंट USB पोर्ट है वो किस चीज़ के लिए है। तो वो डिबग पोर्ट है हमारा। बेसिकली इसकी सहायता से हमें डिबग्स के लॉक मिलते हैं। डिबग्स के लॉक क्या होता है, जब भी आपका मॉडेम बूटअप होता है, जब भी कोई डिवाइस बूटअप होती है, तो उस समय क्या क्या सर्विसेज ऑन हुई, बूटअप स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की गई, वो सारी चीज़ें एक लॉग में प्रिंट होती जाती हैं। आप कभी भी, आप जैसे उबंटू हुआ, ओपन सुसी हुआ, या रेड हैट हुआ, कोई भी लिनक्स
या आप विंडो भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में वो बूटअप्स क्लॉक दिखाते हैं। तो डिबगिंग के लिए वो लॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको मॉडेम बूटअप के टाइम किसी स्टेट में फंसा है, कौन सी सर्विस नहीं चल रही, तो वो चीज़ें आपको सारी चीज़ें डीबग लॉक्स की सहायता से देखती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो फ्रंट यूएसबी पोर्ट है उससे आपके पीसी को एक यूएसबी टाइप सी यूएसबी केबल कनेक्ट करनी है। फिर आप मोबाइल एक्सटर्न का यूज करोगे, उसकी सहायता से आप पोर्ट सेलेक्ट करोगे सिलिकॉन लैब्स CP210X USB टू UART ब्रिज। बेसिकली आप जब मोबाइल एक्सटर्न में एक्सेस करोगे सीरियल कंसोल पे, तो आपको ये जैसे 80 पोर्ट में 80 कॉम दिखाता है, वैसे ही ये पोर्ट इंटरफेस दिखाई देगा। इसको आप सेलेक्ट करोगे और बॉर्ड रेट हमारा वही है 115200। इसकी सहायता से आप एक्सेस कर लोगे सीरियल मॉनिटर ऑफ डिबग लॉक्स। जब भी आप मॉडेम को ऑन करोगे ऑफ करोगे तो आपको सारे लॉक्स प्रिंट होते दिखाई देंगे। द नेक्स्ट थिंग इज डिवाइस एंड मॉड्यूल इन्फो। हाँ, बेसिकली ये कमांड्स हैं जिनकी सहायता से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। अगर फर्मवेयर वर्जन और डिवाइस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 80+ CGMR यूज कर सकते हो। इसके अलावा ATI यूज कर सकते हो। द थिंग सेकंड थिंग इज चेक 5G माइमो स्टेटस। हाँ, अगर माइमो कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना है या इनेबल करना है तो उसके लिए 80+ QNW CFG इक्वल टू डबल कोट में NR 5G माइमो। बेसिकली आप 5G पे माइमो को इनेबल कर रहे हो, उसके लिए ये कमांड है। तो बेसिकली नीचे आप देखोगे तो इस कमांड को इनेबल करने के लिए 1 यूज किया गया है, कॉमा के बाद 1। अगर आप 0 यूज करते हो तो डिसेबल कर सकते हो। हाँ, द थर्ड थिंग इज ADB एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज एक्सेस। बेसिकली क्या है, इस मॉडल में AT कमांड के साथ साथ ये एंड्रॉयड OS भी सपोर्ट करता है। तो आप इसका एक्सेस भी ले सकते हो एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज की सहायता से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप USB केबल जो मेन टाइप सी पोर्ट है उसको कनेक्ट करोगे अपनी लैपटॉप या पीसी से। इसके बाद आपके उसमें ADB का सॉफ्टवेयर होना चाहिए विच इज़ बेसिकली प्लेटफॉर्म टूल्स। और आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, उसमें आप ADB की कमांड्स लिखेंगे, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। द फर्स्ट ADB कमांड इज ADB डिवाइसेस विच इज़ यूज फॉर display the devices which are connected on ADB. The second command is ADB cell. ADB cell की सहायता से आप मॉडेम का एंड्रॉयड लेवल पे एक्सेस लेते हो, एज आप रूट यूजर ही एक्सेस लोगे। इसके अलावा अब आप जब एंड्रॉयड का एक्सेस ले लोगे तो वो बेसिकली एक लिनक्स का ही वेरिएंट है, तो आपकी लिनक्स की बेसिक कमांड्स उसमें सारी रन करेंगी। इसके अलावा जो भी कमांड उसमें रन करती हैं आप टैप डबल टैप प्रेस करके आप देख सकते हो। और आपको कौन सी सर्विसेज चल रही हैं उसकी स्टेटस को जानने के लिए सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्टार डॉट सर्विस यूज करना है। स्टार यहाँ पे हमने क्या किया है, वाइल्ड कार्ड यूज किया। वाइल्ड कार्ड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ का नाम ना दे पाएँ। तो इसमें क्या है, जो भी चीज़ें डॉट सर्विस होंगी एंड में, वो उन सबकी स्टेटस को शो कर देगा आपके मॉनिटर पे या PC मॉनिटर या डिस्प्ले पे। हाँ, अब लास्ट पॉइंट जो है वो था एंड्रॉयड डिबगिंग। इसके बाद मैं आपको भी एक्सेस करके दिखाता हूँ और जो भी आपकी क्वेरीज हैं मैं उनको वन बाय वन रिजॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहली क्वेरी आई थी MU से, सिद्दीकी सर की आई थी। तो मैं उसको बताता हूँ, हाउ टू कनेक्ट द सेंसर बोर्ड विथ एवल्यूशन बोर्ड। ठीक है सर, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अगर आपको एवल्यूशन बोर्ड सेंसर बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोरल ज्ञान का एक्सेस लेना पड़ेगा। कोरल ज्ञान का एक्सेस लेने के बाद आप वाईफाई डिफाइन करोगे। बेसिकली वाईफाई डिफाइन करने के लिए आपको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी। जब आप उसका एक्सेस ले लोगे तो एक कमांड होती है रास्पाई स्पेस हाइफन कन्फिग, जिसकी सहायता से आप उसके वायरलेस की कन्फिगरेशन को ओपन करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिवाइस लेवल। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो SSID आपसे पूछेगा वायरलेस लैन के लिए। तो आप उसमें क्यू सॉफ्ट AP, Q और S कैपिटल में है और लास्ट में AP कैपिटल में। उसके बाद आप ये एंटर करोगे, उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा जो विच इज बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज 1234567890। आप पासवर्ड एंटर करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका कोरल ज्ञान क्यू सॉफ्ट AP SSID के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और इसकी सहायता से हेलो। हेलो। यस, हेलो,
Yeah, Hello, speak on, sir. hello, sir. Sorry, Sir, I can't understand. to the screen, I suppose you are showing something. We are stuck at this screen itself. Are you showing something, or we are at ADB and at debugging bridge place? Sir, there is. Rajsi sir, can you I please saw that you make are it a showing public something. chat? You are explaining something that is not in the screen. So that's why I was asking. Okay, I will show. What you saying? मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा था ना जो एमयू से सर ने पूछा था, तो वो चीज़ें उन्हें नहीं दिख रही, उन्हें ये लग रहा है कि ये स्टक हुआ है इसलिए। No, no, no. Actually, that there is a query related to Sharik ji from AMU. How to connect sensor board with the evolution board? बेसिकली द सेंसर बॉक्स इज कोरल ज्ञान से। आपके पास एक कोरल बॉक्स दिया है ना, जैसे सेंसर का बॉक्स दिया था ना, एक रास्पबेरी वाला। हाँ जी सर. हाँ, वो सेंसर बोर्ड का रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा था अभिषेक ने। सो दैट क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय एएमयू, सो दैट क्वेश्चन वाज एड्रेसिंग दैट वन। हाँ, ओके। तो सर मैं अब ना स्क्रीन शेयर करके वो आपको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। मैं वो सारे Okay. पॉइंट दिखाता हूँ। हाँ, So all these commands we will explain you in online also with connecting our devices. हाँ, So meantime we are explaining that there is a query related to the sensor board. So we are both are correlated. Okay, sir. I hope you ओके। understand. सर वेट फॉर 1 मिनट व्हेन आई एम कनेक्टिंग द कोरल ज्ञान फॉर द फर्स्ट क्वेरी। ADT Android board है that is connecting to
Hello, Abhishek. Hello. Abhishek, you are not audible. हाँ यस मैम बोले। सुनील वॉइस नहीं आ रहा है अभिषेक का. अब आ रही मैम? मैम Abhishek, your voice is not. Okay, he will re-log in. Yeah, madam, rights दे देना नवीन को. हेलो। उन्होंने नहीं आया. Yeah, Abhishek will rejoin with another laptop. There is an issue in that laptop. Okay. He will rejoin in few minutes. Okay. Yeah, madam, can you please give the rights, sharing rights to Abhishek? Abhishek, I think it is now you're audible.
Sir, I am audible. Okay, let's start. हाँ, बेसिकली आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ जिससे कि क्लियर आपको दिखाई दे आप सभी को। अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैंने क्या है, कोरल ज्ञान का एक्सेस ले रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ होस्ट में ज्ञान कोरल, और इसकी आईपी जो है मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ आपको कि आईपी क्या क्या है। बेसिकली आप देख पा रहे हो डब्ल्यू लैन, बेसिकली यूज फॉर वायरलेस लैन। इस पे अभी इसे आईपी क्या मिली 192.168.225.93। बेसिकली इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद क्यूसॉफ्ट एपी, बट आई विल शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर इट। अभी जो मैंने कोरल ज्ञान का एक्सेस ले रखा है वो ईथरनेट पे जो इसकी आईपी है 192.168.11.35 इसके थ्रू ले रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वाईफाई को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे कि आप कोरल ज्ञान का डेटा कोरल अनुभव की सहायता से आप अपने एनएमएस पेज पे भेज पाओ, या आप कोरल ज्ञान को कोरल अनुभव से कनेक्ट कर पाओ। इसके लिए मैं सबसे पहला कमांड यूज करूँगा रास्पाई -config। ये बेसिक कमांड है फॉर द ओपन द कॉन्फ़िगरेशन पेज ऑफ वायरलेस। आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम ऑप्शंस कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग्स, आपको इसमें जाना है। यू विल प्रेस द एंटर की। जो सबसे पहला ऑप्शन है वायरलेस लैन, एंटर एसएसआईडी एंड पास फ्रेज। तो आप एंड अब यहाँ पे एसएसआईडी पूछी जा रही है। आपको यहाँ पे एसएसआईडी कोरल अनुभव की देनी है विच इज क्यू सॉफ्ट एपी, कैपिटल क्यू, कैपिटल एस, ओ एफ टी, कैपिटल ए, कैपिटल पी। ये एसएसआईडी आप कभी भी अपने लैपटॉप या पीसी में जब भी स्कैन करोगे तो अगर एवोल्यूशन बोर्ड स्टार्ट है तो ये एसएसआईडी आपको शो होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड है 1234567890। एंटर किए। अब इसके बाद आप फिनिश करेंगे। इसके बाद आप या तो नेटवर्क की सर्विसेज को रिस्टार्ट कर लीजिए या आप डायरेक्ट बोर्ड को रिबूट कर लीजिए। बेसिकली मैंने बोर्ड को रिस्टार्ट किया है जिसकी सहायता से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और आपको आईपी मिल जाए। आप अभी जो मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं इसमें इसे एक पहले से ऑलरेडी आईपी डिफाइन है। अगर आपने कोई भी एसएसआईडी डिफाइन नहीं की है तो आपको यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं मिलेगी। डब्ल्यू लैन इंटरफेस के ऊपर, वायरलेस लैन 0 के ऊपर आपको कोई भी आईपी नहीं मिलेगी। मैं दोबारा एक्सेस ले रहा हूँ। पासवर्ड वही है CGYAN@817। अब मैं दोबारा आईपी चेक करता हूँ कि इसे क्या आईपी है। इसे सेम आईपी असाइन हुई है रिबूट के बाद। अब ये मेरे क्यूसॉफ्ट एपी से कनेक्टेड है। बेसिकली मैंने इसका एक्सेस ईथरनेट पे ले लिया है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से आप कोरल ज्ञान को कोरल अनुभव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सारिक सर, कोई और क्वेरी? अगर कोई चीज़ आपको डाउट हो इसमें। हेलो सारिक सर। Sharik sir, I think that connectivity between GAN and this evolution board is explained here. If any doubts regarding this, you can ask now. Otherwise, I will share the number of Abhishek Kumar to you, and you can contact directly to him. So basically, what he done here, that device GAN device, which is connected to that laptop through a Ethernet port, and he configured it with
evolution board. So, using the Wi-Fi of on Coral. so any So doubt? Because it is a very important session. I mean, related to 5G lab, evolution board is the only thing we can configure and change things modern ways. So that is more important. That this device is more important than the 5G lab. okay, reply again. The next question क्या था? ये सर नेक्स्ट क्वेरी क्या है? I think there is no other questions. Queries on only this one. Okay, so I can show अच्छा the ये basic configuration. राजदीप सर ने क्या पूछा ना क्वेश्चन राजीव sir, can you ask it again because we couldn't find that query related to yours. राजदीप सर का एक email आया. Okay, we will show you that the AT commands in that evolution board by connecting through that USB port, which is in the right side of that device. You can connect it to directly to your laptop and configure it. Okay, so I will show you all the basic commands, which is relevant to this 5G lab. कितने पेज नंबर पे था? कोरल गेम. अरे कोरल गेम कितने पेज नंबर पे था? माइनस कल ही हुआ था. माइनस के बाद आया होगा. टाइमिंग के बाद आया. Page number 304. Okay. Wait, sir, I will show you all the basic required commands. Now hide to that side. Okay. Wait. Okay. Move out. बेसिकली मैं यहाँ पे मोबाइल एक्सटर्न की सहायता से कोरल अनुभव का एक्सेस करूँगा अभी. फिर आपको जो रिक्वायर्ड कमांड्स हैं, जो उनके बेसिक सिंटैक्स हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ. सबसे पहले हम एक्सेस लेने के क्या करते हैं, सेशन पे क्लिक करते हैं मोबाइल एक्सटर्न एप्लीकेशन खोलने के बाद. उसके बाद हम सेशन पे क्लिक करते हैं. इसके बाद हम एटी कमांड सेलेक्ट करेंगे. इसके अलावा हम बॉर्डर डिफाइन करेंगे. Now I access the board. For better understanding, I write a AT command. हाँ. On my screen you are seeing the test command, which is equal to question mark. I will show how this command is work.
AT plus QNW CFG इक्वल टू क्वेश्चन। मैंने बताया आपको कि आप AT कमांड, जैसे ये AT कमांड है QNW CFG, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूज करें। इसके बाद वो क्या होगा, जो भी आपके पास आउटपुट आएगा तो उसमें वो बताएगा कि आप क्या क्या पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, उन पैरामीटर के अलॉन्ग क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे माइमो माइमो के लिए आपको देखना है या LT के लिए देखना है। मान लीजिए हमें 3GP रिलीज देखना है। एक कमांड का कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हाँ, हैं ये ना। एक कमांड उसको शेयर कर लेना उसमें। हाँ, ओके। मैं उस कमांड का जो PDF मैं वो आपको भी शेयर कर दूंगा सभी Okay, को। this all commands in this this documents only that you will share in that public chat. You can take from there. तो बेसिकली रीड कमांड की सहायता से मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जान सकता हूँ, उनकी अकॉर्डिंग क्या वैल्यू डिफाइन करनी है वो जान सकता हूँ। अब मैं रीड कमांड की सहायता से वैल्यू रीड करूँगा। जैसे मुझे जानना है कि 3GP रिलीज कौन सा है, ये मॉडर्न सपोर्ट करता है X65, कौन से 3GP रिलीज वर्जन पे है, उसके लिए मैंने सेम कमांड यूज़ किया AT प्लस QNW CFG इक्वल टू। अब मैं पैरामीटर वैल्यू यही यूज कर रहा हूँ। तो ये रिलीज 16 पे है। अगर आप चाहो जो भी इसमें ऑप्शंस हैं आप उनकी सहायता से उन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो या उनकी करंट वैल्यू रीड कर सकते हो। तो ये तो जो हमारा रिलेवेंस था वो था रीड कमांड के लिए, ठीक है। अब सॉरी, टेस्ट कमांड के लिए था। अब मैं बताता हूँ रीड कमांड के लिए। जैसे मुझे जानना है कि APN क्या डिफाइन है, AT प्लस CGD CONT क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी क्या है, हमारा IMS के लिए एपीएन डिफाइन है, SOS के लिए डिफाइन है, XCAP के लिए डिफाइन है। अभी इंटरनेट के लिए कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये तो हमारा रीड कमांड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट कमांड कैसे आप यूज करोगे। अगर आपको APN डिफाइन करना है, जो हमारे प्रेजेंटेशन का एक पार्ट था, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको दिखाना है। मैंने इस कमांड को यूज किया इक्वल टू। अब मुझे पहले इंटरफेस पे यूज करना है, पहले APN एड्रेस पे, कॉमा, किस प्रोटोकॉल वर्जन के लिए, IPv4 वर्जन 6 के लिए। आप IPv4 के लिए भी कर सकते हो, IPv4 वर्जन 6 के लिए भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द आपका कोर क्या सपोर्ट करता है, कॉमा। अब मुझे डबल कोट में अपना APN नेम लिखना है, बेसिकली विच इज इंटरनेट। तो द रिस्पॉन्स कोड इज ओके। तो मेरा जो APN है वो डिफाइन हो गया। अब मैं APN कैसे चेक कर सकता हूँ, दोबारा मैं रीड कमांड को चला के APN चेक कर लूँगा कि APN डिफाइन हुआ है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो APN डिफाइन हो गया है, AT प्लस। The next command is okay. I will write in CGP adder. This command is used for find the IP which is given by core to that UE. आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट APN है इंटरनेट, उस पे इसे क्या IP मिली है 10.45.0.2 which is for internet APN, and second is 10.46.0.2 which is for IMS। तो दो एपीएन के ऊपर इसे 2 IP मिली है। एक 45 की सीरीज आपको दिख रही होगी जो इंटरनेट के लिए है, और 46 की सीरीज कॉलिंग के लिए विच इज बेसिकली फॉर IMS। तो मैंने आपको टेस्ट कमांड बता दिया, रीड कमांड बता दिया, राइट कमांड बता दिया। अब इसके बाद जो इनकी बेसिक कमांड्स हैं मैं वो आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ATI बेसिकली क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, मॉडल नंबर और सॉफ्टवेयर वर्जन विच इज रिवीजन वर्जन आल्सो डिफाइन हियर। द मॉडल नंबर ऑफ द मॉडेम इज RG520F EB, and the second thing is for MC number. If you want to know what is the MC number of the SIM, the command is AT plus CIMI, which is basically for 907 at the end, 001010123456907
7. The 001 and 01 is for the MCC and MNC, mobile country code and mobile network code, which is defined globally. For the Geo, you use 405 or 408, I think. The next command is हाँ 80 plus C1 for the minimum functionality. अगर आपको मॉडर्न को मिनिमम फंक्शनैलिटी के साथ रखना है तो इसके लिए आप 80 प्लस C1 यूज करेंगे. बेसिकली अब क्या है, आपका मॉडर्न बेसिकली नेटवर्किंग की सारी सर्विसेज बंद कर देगा और ये रजिस्टर नहीं होगा. अब ये मिनिमम स्टेट पे जिसमें के लिए पावर अप रहेगा. पर हाँ, इस कंडीशन में ये सारी 80 कमांड आपकी रीड कर सकता है. तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे. 80 प्लस C1 इक्वल टू 1. 80 प्लस CGP एडर. अब आप देखेंगे पहले आपको आईपी क्या मिल रही थी, 10.45.0.3, अरे 2 मिल रही थी, अब 3 मिल रही है. क्यों? क्योंकि मैंने मॉडेम को एक प्रकार से सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है. उसकी नेटवर्किंग की सारी सर्विस बंद करके मैंने उसको रिस्टार्ट किया है. तो उसको DHCP विद अनदर आईपी मिल गई विच इज अवेलेबल इन कोर. द नेक्स्ट थिंग इज 80% में सम हो गया. ये मैंने कमांड आपको दिखाई दी, APN डिफाइन करना बताई दिया, रास्पबेरी पाई का एक्सेस. इसके अलावा आप चाहो तो कोरल ज्ञान की सहायता से भी आप एवोल्यूशन बोर्ड को एक्सेस कर सकते हो. बेसिकली एमसी इंटीग्रेशन आप जिसको बोल सकते हो, या रास्पबेरी पाई के थ्रू. तो हम एक एक्सेस करके आपको दिखाते हैं कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो. इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले मुझे उस रास्पबेरी पाई का एक्सेस लेना होगा जो पहले से मैंने ले रखा है. आपको अपने कोरल अनुभव को USB पोर्ट टाइप सी मेन पोर्ट के थ्रू उस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से कनेक्ट करना होगा, जो कि मैं अभी कनेक्ट कर
Okay. Let us Okay. check it. Okay. Hello. Audible? You Hello. talk. I'm audible. Yeah. Yes, audible. Okay. Huh. Basically, here I am showing the integration of MC with the Coral evaluation. Sorry, Coral Invo 5G evaluation board. I can restart this. I think my audio was muted for some time automatically. I'm taking the access using Putty. I will soon I do it. 192.168.35. So wait, I am increasing the font size. You can see my screen. मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्किटिंग कैसे की, मैंने कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है। सबसे पहले मैंने एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड या कोरल ज्ञान को कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप से यूजिंग ईथरनेट। ईथरनेट की सहायता से मैं कोरल ज्ञान का एक्सेस लूँगा और उसकी यूएसबी से कोरल अनुभव कनेक्टेड है। तो मैं कोरल अनुभव में ईटी कमांड कोरल ज्ञान की सहायता से चलाऊँगा। बेसिकली आप किसी भी ओएस के थ्रू आप इस पे ईटी कमांड्स रन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो डिवाइस कनेक्टेड है वो यूएसबी पोर्ट पे शो हो रही है कि नहीं हो रही है। ns/dev tty usb2 सॉरी। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। द USB2 इज यूज फॉर द एटी पोर्ट। तो आई एम यूजिंग मिनीकॉम सॉफ्टवेयर। आई विल टू यूज द कॉम -d सॉरी -d/dev tty usb2 -b 115200. Here is the minicom command. Minicom is the serial console software. -d used for the defining the device path. /dev/tty usb2. This part is basically it is my AT port for this CLI based system, and -v for used for baud rate, which is 115200. Okay. Now I am accessing the Coral Bow using the MC board. I am writing the first command ATI. So you can use any OS for the configuration of Coral and any OS. Basic requirement is USB drivers. Only USB drivers are available, and the serial console software is also available. You can take the access or configure the modem, 5G modem or Coral and using any board with any OS which supports two things. One is a USB drivers and second is serial console software. You can use it. I am showing some basic commands. AT plus CGP header. So here I am accessing the Coral Anva using Coral Yarn. You can use another Raspberry Pi, Orange Pi, Bharat Pi, BeagleBone Black boards, STM boards, etc. If any query, you can chat publicly, write on chat. किसी को और कोई query? So again, if any queries related to this evolution board, you can ask here. Again, we share one number here. You can text your messages over there. When directly will contact and help you out. So these are very important topics in the 5G lab. As we can, other systems are only configurable, but here actually we can change the parameters of that, modems and other connectivity. So this is very important component in that 5G lab.
I hope everyone knows this, and any query related to this can be asked here, because Abhishek is working on this evolution for past 2 years. He know a lot of things, a lot of experience on related to this evolution board. Again, in out of 100 labs, we are supplied all everywhere. 26. 75 sites we are supplied the same items. Again, once again, you can ask any queries related to this configuration, any parameters, any connectivity errors, any problems related to your accessing this device. You can directly contact to us, and anything you can ask here also. Okay. Okay, next thing is the debug UART. I will show you for the troubleshooting. आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैंने क्या किया है, अभी कोरल अनुभव को अपने लैपटॉप से यूएसबी केबल डीबग पोर्ट, जो कि बेसिकली टाइप सी पोर्ट है फ्रंट साइड ऑफ द कोरल अनुभव, उसके थ्रू कनेक्ट किया है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग बता रहा हूँ कि ट्रबल शूटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रबल शूट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप सेशन पे जाओगे, सीरियल पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो मैंने वो नाम दिखाया था आपको, सिलिकॉन लैब्स CP210 X USB to UART ब्रिज, आप इसको सेलेक्ट करोगे। जब भी आप मॉडेम को स्टार्ट करोगे, आप जब बूट रीसेट की प्रेस करोगे 3 to 5 सेकेंड, तो आपको ये सारे लॉक्स दिखेंगे। इसके अलावा जो भी सर्विसेज चालू हो रही हैं बूटअप के टाइम, वो आपको सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मॉडेम किस स्टेट में अभी है। अगर बाय द वे वो किसी स्टेट में फंस जाता है, तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डीबग यूआरट से मिल जाएगी कि किस स्टेट में फंसा है, उसे हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ से सामने से कनेक्टेड है? हाँ, मैंने बता दी, सामने से कनेक्टेड है। इसके अलावा बेसिकली ये जो लास्ट लाइन है कि ये कौन सा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है, रेफरेंस। और इसके अलावा इस बोर्ड में कौन सा स्नैपड्रैगन का मॉडेम सपोर्ट कर रहा है, स्नैपड्रैगन X65, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा वाईफाई की सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, ऑडियो की सर्विसेज स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, इन सारे के आपको लॉग्स करंटली में दिख जाएंगे। इसके अलावा स्लाइसेस की सर्विसेज ऑन हुई कि नहीं हुई, और भी जो भी पोर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, वाईफाई स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो टारगेट थी नेटवर्क की वो रीच हुई कि नहीं, ये सारे जो भी डिबग्स के लॉग हैं वो आपको डिबग पोर्ट के थ्रू मिल जाएंगे। और ये बटन की है, बेसिकली बटन्स के की हैं। जब आप रीसेट की दबाते हो तो कौन कौन से रजिस्टर्स कब हाई होते हैं, कब उनकी क्या वैल्यू होती है, वो इसमें डिफाइन है। अब बूट के समय कौन सा वर्जन स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इमेज वेरिएंट कौन सा है, ओईएम वर्जन कौन सा है, बूट इंटरफेस कौन सा है, जैसे नैंड फ्लैश है, सिक्योर बूट ऑफ है, ओके। इसके अलावा जो भी चीज़ें किस टाइम इस टाइम पे चालू हो रही हैं वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टोरेज ऑप्शनल इमेज यूज किया जा रहा है कि नहीं यूज किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बॉर्डेट की भी इंफॉर्मेशन आती है। वेट 1 मिनट, आई एम फाइंडिंग बॉर्डेट इंफॉर्मेशन। What is the core and what is the frequency, what is the type of RAM, flash through, etc. Oh, USB, where is the USB information? Uh, USB information. USB information. Okay, wait. There is a USB information. It also print the USB information. USB for serial, USB for fed, init, intel, read bus. Okay.
segment address of boot image. हाँ, you can hear the product in false IG 520 FEB manufacturer capital and boot. So you can find all the related information during which is during the boot which is required. Okay. If any query, please ask. अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो बताएं. हम्म, लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी. अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई भी किसी भी स्टेट से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्लॉट 1 या 2 में. हाँ, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि स्लॉट कैसे सिलेक्ट करते हैं. हाउ व्हाट इज द कमांड एटी कमांड फॉर द सिलेक्टिंग द स्लॉट, सेम स्लॉट. हेलो, आई एम ऑडिबल. यस, आई एम ऑडिबल. ओके. तो सिम स्लॉट कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसकी क्या कमांड है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. बेसिकली 80 प्लस QIM स्लॉट, ये 80 कमांड है जिसकी सहायता से हम सिम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं या करंट वैल्यू पैरामीटर रीड कर सकते हैं. जैसे अभी क्या है, स्लॉट 1 पे सिलेक्टेड है. हम कंफर्मेशन के लिए IP चेक कर लेते हैं कि IP क्या है. ठीक है, अब इसको IP मिली है 10.45.0.4. मैं अब स्लॉट चेंज करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या IP मिलेगी. 80 प्लस QIM स्लॉट इक्वल्स टू 2. हाँ, हमें आउटपुट क्या मिला कि सी पिन नॉट रेडी, मतलब बेसिकली सिम रेडी नहीं है. क्यों? क्योंकि सिम स्लॉट 2 में कोई भी सिम इंसर्टेड नहीं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिम को सिम 2 में लगा रहा हूँ. मैंने सिम को सिम 2 में लगा दिया. बेसिकली मैं फंक्शनैलिटी को मिनिमम करूँगा. सॉरी, 80 प्लस C fun equal to 1. सॉरी फॉर रॉन्ग कमांड. You can see here, basically I am showing 80, which slot it is using. QIM slot question slot 2, and what is the IP on that slot. CGP header. 80 plus CGP header. You can see here the IP is 10.45.0.5.
for the second slot. So using this command, you can switch the SIM slots. Okay. If there is any query regarding other things or SIM slot, you can ask. I'm waiting for your chats. Okay. ओके 11:37 पे। हेलो सर, मेरी आवाज़ चेक करना आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो 11:37 का मैसेज है, 11:53। ओके सॉरी। ठीक है, तो सिम स्लॉट की इन्फॉर्मेशन हो गई, मीटी कमांड की इन्फॉर्मेशन हो गई। हाँ, मिल जाएगी। किसी और की कोई क्वेरी सर? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी 5G एवोल्यूशन बोर्ड को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, नेटवर्क को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज और योर क्वेरीज। कनेक्टिविटी का दो बार एक बार वापस बता देना, वो स्टार्टिंग में दो स्लाइड्स आना कनेक्टिविटी का है, वो मेनली वही इशू कनेक्टिविटी वाली वेट, वेयर इज द पीडीएफ? कनेक्टिविटी वाली स्लाइड। ओके, So again, that connectivity is again we are showing if anything related to, basically I see that lot of places that connectivity diagram, connectivity procedure, people are not able to find out. So this is what we are connecting that Anubhav device to the your laptop through a USB port that is in the right side of that device. Then Abhishek will explain it again how it will be connected and all. the last point is our this session is for the evolution board. We start the with evolution board. How will you connect with evolution board? First thing, evolution board registered on 5G sim, so we required a 5G sim, then 5G evolution board. Then how to start it? First, please insert the sim at any slot, then connect right side type C USB with your PC or your laptop. The evolution board will on both 5G adapter and USB on both sides. You can use USB for power up and the AT commands also, or use the power adapter. When you connect the USB, then there is a key, reset key in front of Coral Anubhav. You can press the key for 3 to 5 seconds. Basically, when you connect the USB, the board will power up. The 5G modem RG528 will not power up. So power up the 5G modem, we want to press the reset button for the 3 to 5 seconds. When you press the reset key for the 3 to 5 seconds, the modem 5G modem will boot up. After 50 seconds, you can take the 80 ports for the basic configuration. And you want to also required for some USB drivers for the accessing of Coral and there is two things. Basically, connect the 80 port and the required baud rate. Baud rate is 115200. In device manager, you can see the 80 ports also, 80 and DNMIA ports in the port section. Using any serial console software, using Putty, Mobile Cat, and another softwares, which is serial console software, you can use for the accessing. You can access the Coral Envoy using any OS, like RTOS, like Ubuntu, like Debian, like Windows, like Raspberry, embedded OS, etc.
After you can see the first page of mobile extern. Basically we are the reference of the mobile extern. You can click on the session page. Then you will prompt up a session settings where you can click on serial, where you see the serial port. You can drop down menu for the selecting AT port and the baud rate. After the selecting both things, you can press on OK button. Then you got the access of Coral Angle for the configuration of modem. Okay, the last thing is ADB. I will show you the ADB within 1 minute only. Basically, Coral Envoy is connected with my PC, so I can find the which is device ADB devices. ADB cell for the accessing the ADB Android. You can see all the services: system, CTL, status, wildcard dot service. Using this, you can see all the services which are running in the evolution board. uh, Logging services जैसे logd services, Quectel voice services for the voice purpose. This is the QC map WWAN boot up services, basically for wireless LAN boot up services, which is basically for Wi-Fi. That is the Bluetooth service, etc., and the many processes, Wi-Fi services. Okay, here all these are shown. You can using the ADB, you can access it. Now everything is, I think, uh, wind up in this session for the evolution board. If any query, please ask. I hope this session was give you a lot of inputs from our side regarding the evolution board. Uh, again, this is very important board in lab, and it is configurable to in a very different parameters we can change in this device. So overall, there is connectivity, how it can be connected, and that document we shared in each and every lab for the AT commands that you can access and use those commands. And if anything related to that queries, you can ask Abhishek or us. We will connect you directly in WhatsApp or any other medium or form. So again, the next session is regarding CP, uh, customer premises equipment, which is a Wi-Fi device. So that will taken by Naveen Gupta. So meantime, we can ask any questions related to this board. Thank you, all of Thank you. you, thank you, thank you. Thank you. Now I am closing my session. Naveen Kumar. It'll take 2 minutes to connect again. Thank you, Sharik ji. Please contact us. So the next section is from Naveen Gupta. Uh, मैडम राइट्स दे देना उनको नवीन गुप्ता को
So the next section is for CPE, the customer premises equipment. It's also having the connectivity through the 5G SIM, and that will convert the 5G SIM signals into the Wi-Fi. It is just like the uh, Geo Air Fiber or Airtel Air Fiber, where the rural connectivity can be achieved through this. Via the CPE, where the where fiber connectivity is not available or Ethernet connectivity is not available, just like in rural areas, through the GSM towers of 5G, the villages can be equipped with the internet connectivity. So this is the equipment. In this equipment, you can see the cellular antennas and the Wi-Fi antennas. It's having only one SIM slot, one LAN port and one WAN port, and that will be power on by the DC adapter. So this is the connectivity. How you can connect your laptops, mobile phone, etc., to the 5G CP, and how you can log in it. So there is a LAN port. Directly connect to your PC and put the PC on DHCP mode. So that will be connected with your PC, and then you can do the programmings. So I am going to show you how we are doing this. The default IP of the CP is 51.0.0.1. Username is root, and the password is also the root. First of all, just check the cellular connectivity. Insert the SIM and go for the APN setting. You can put here the name of multiple APNs and add the APNs also. Password should be nothing and authentication should be nothing. These are the network configuration for the 5G SIM. That is right now on auto, because we have only 5G network in the lab, so that will connect to the 5G SIM. This is also important. You can also lock the band. So the 5G modem of the CPE will only connect to the particular band. You can also select the operator manually. Right now it is on auto selected, but when you will search, that will start searching for the adjacent networks.
And another important thing is the configuration of Wi-Fi. So here you can see on the wireless section in general, there are two frequency bands available for the Wi-Fi. One is 2.4 gigahertz and one is 5 gigahertz. These are the SSIDs. So you can change accordingly to your lab, and these are the encryptions. All latest WPS support is available for both the bands. You can set your password also there for the Wi-Fi connectivity. If you will go to the advanced setting in wireless, so there is also manual settings available for both the bands 2.4 gigahertz and the 5 gigahertz. You can select the frequency channeling, bandwidth, what bandwidth you want to add, and the transmission power. You can also control the transmission power as well as for the 5 gigahertz band. Bandwidth selection also possible, and the transmission power also control for both the bands. Here you can see the system information, device name, software version, how long it was up, time zone, model number, and this is the cellular details of your mobile SIM. It is connected with a TDD NR5G IMSI of the particular SIM which is used in the 5G CP IMEI band selection. It is on band 78. ARFCM and PLMN ID also is there. In the management section, if you go to the device management and go to the for the hardware specifications, go to the system information. All the system information is available there. Model number, firmware version, kernel version, the CPU of dual core, RAM size, and this is the 5G modem specification. This is SDX 65 Snapdragon. Frequency is sub-6 gigahertz, 4x4 MIMO is supported, 3GPP release is 16, and the 5G bandwidth is supported from 20 megahertz to 100 megahertz. And mode will be supported like it can be connected through 5G SA, 5G NSA, and LTE. And these are the wireless specifications. Standard wireless specification, band support dual bands, 2.4 gigahertz and the 5 gigahertz. MIMO configurations for the 2.4 gigahertz and the 5 gigahertz MIMO configurations. 4x4. 2.4 gigahertz data rate and 5 gigahertz data rate throughput that can be achieved by this CP.
Another important thing is the VPN connectivity to connect this device to the rest of the world in the secure manner. Some methods are also there, that is PPTP, L2DP, IPsec tunneling, and VPN tunnels. Just like IPsec tunnel, you can make the connections from here. Authentication IDs, these are the configurations. If you have VPN connectivity, you can connect it from this manner. Other protocols for routing: static route, RIP, and OSPF, and BGP. All are available. So you can connect your or route the IP packets which are coming to the CPE. You can send it to the rest of the world through this IP routing step. Just like IP static route, if you will enable this thing, go to the new settings, node should be enabled. Then these are the interface name, destination IP where you want to send the data, NetMask, gateway, and interfaces. Just like in networking side, this CPE supports both the IPv4 and IPv6. If you will the your laptop or your mobile phone through the Wi-Fi of the CPE, it will provide the range, the LAN IP address of 51 series. IPv6 is also possible. You have to enable it and assign type for LAN side and both the WAN side. Firewall functionality is also possible. It has a mini firewall enabled here, just like other firewall functions which we have discussed yesterday. The port forwarding. So these are the settings or programmings. Selection of multiple protocols which you want to do it as per your need. Source code, destination IP, and destination. Demilitarized zone. Again, you will enable it. There is IP filtering also. MAC filtering also can be achievable. So particular MAC ID which will be connected to the CP can be allowed, and rest of the IDs will be disallowed. You can do the URL filter also. Just like google.com or something else. You want to enable or disable, you can control firewall features from this CP as well. Net traversal. One more important feature is firmware upload. If you want to upgrade the system,
So you can manually upgrade the system through the firmware, just like this is a new firmware which you want to upgrade. Just click the upgrade. That will take automatically, and you can upgrade your system also. Here, backup. You can take the backup of existing configuration, just like that. Take the backup and save. You can see here the existing backup, programming backup of this device has been saved to your laptop. And if you want to restore this backup, go to the restore and click the restore button. So backup will be restored. All function can be achieved by the GUI. So you don't need to go to the CLI. How to diagnose the connectivity? Let's suppose I want to check from this CPE core is pinging or not, or MEC server is pinging or not. You can check from here. Also the trace route command, and speed testing. This is the authentications for the captive portal and user management. If you have the cloud connectivity and you want to control this CPE through the cloud, you can manage everything through the cloud, just like how OTP authorization, data speed limitation, time limitation, etc. etc. Just like when you enter in the airport area. So I am just going to upgrade the system. That I have already covered. Any question regarding that? Till now? No question. Okay. So I am upgrading the system.
That will take 3-4 minutes. And here to proceed. Yeah, madam. Actually, I shared all the email IDs to your personal WhatsApp number. So please share that yesterday's recordings to that recording links to that email IDs which they are requested. I mean, you can send it to 25 sites. Even Gigi, those who are attend here can also able to see that. So I shared all the email IDs which is available in that public chat to your WhatsApp number. Okay. So continue. So you can see here. Hello, respected all members. We will share the recordings of all the training session by the EOD after completing this session. Yeah, fine, fine, thanks. So you can see here. So we are updated this CP through our new images and all. Now you can see the systems. So you can see here after upgrading the cellular SIM is connected and the SMF session management function has provided the IP to the SIM. So again go to the diagnostic and check the ping test of core. Here you can see the TTL. Core is reachable, just like MEC server. This is also reachable. NMS server. This is also reachable. One more thing. You can see from the cellular section the serving cell. On
on which the SIM has been connected. That is NR5G SA, duplex mode is TDD, mobile country code, mobile network code, cell ID, physical cell ID, tracking area code, ARFCN, band is N78 band, and RSRP, which is getting from the G-Node V, and the network parameters you can see here. From the data uses, this is the real-time activities, real-time uses of the data. You can check it by hourly, daily basis, weekly basis, or monthly basis. So when you will connect the uh, a laptop or mobile phone or the AR/VR device to this CP, you can reach up to MEC servers through the AR/VR device. With one MEC application we have developed for the AR/VR device, so you can reach to this application via the 5G network. How it will work? The AR/VR device will connect to the Wi-Fi of the CPE, and the CPE is connected with the 5G network via the SIM that will connect you to the core, and from the core you can go to the any server which is situated in your lab. Wait for a second. One more connectivity is also possible. Besides the Wi-Fi, you can use the Ethernet port of the CPE. So you can connect to the 5G network via the Wi-Fi device and the Ethernet port as well. These are the Ethernet ports, vent side and LAN side, and you can control the flow. So, any question regarding that?
So here actually the configuration part only, and we show how to update the system through that web portal. And wireless section we shown how it can be, and there are the features which is in the firewall that also we shown, and that's all about this system. Any queries you can ask now. Windows on 5G board. So today's schedule we have a query session from 5 to 6. Okay, so you can ask any queries related to the previous classes regarding the 5G core radio, and evolution board also be done. So we can ask any of the queries there, and we will try to answer all these queries. 5 to 6 session. So far, no queries. I think we can wind up now. I mean, after the lunch, we can continue with a new session, that is 5G drone. Then after that, the AR/VR session is there, and 5 to 6 is our schedule is for the queries related to 5G core and radio and other devices we have shown in yesterday and today. Okay, Madam, can we wind up because there is no queries related to this particular session? So we can start at 2:30, ma'am. Yeah, fine. Thank you. So we can start with that 5G drone. Share the screen. नहीं, ठीक है, पहले share. So again, the sharing rights also we need.
So the Mendoza team is joining. Meantime, we can see that your drone. What are the things are there? There is a charger there. Charger. There are two type of charger we separate. One is Wi-Fi based charger, and one is the normal one. So there is an application also be provided, and you can see that one ground control software also there. The ground control software is to see the location and know that drone path, and we can uh, configure from that end. The system components series mentioned here. System is composed of several key components that work together to ensure smooth flight operations, management of the vehicle. These components include the flight stack, middleware, hardware abstraction, and the operating system. Uh, can I see the picture here? Minutes. Uh, Madam, can you just give the rights to Anup? अनूप के पास है ना शायद। अनूप के पास है ना, अनूप आ गया। मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। Yeah, Anup, are you able to hear me?
Anup sir, are you there? Hello, Anup sir. Hello, am I audible? Yes, you are audible now. Naveen sir, give us 5 minutes. We are just setting up the mic. There is some problem. Just 5 minutes. Anup will be joining Okay. in. Okay, no problem. There is a small delay in the operations. It will take another 5 minutes to connect with that Mendoza team. We are really sorry for the delay. Hello. Hello, Sunil sir. Am I audible? Yeah, yeah, I know, but it's audio audible. Audible. Yeah, yeah. Thank you for. Sorry for being late. Can you please presentation? Please provide me the presentation, right? Yeah, surely. Anupama madam, can you just give the rights to Anup Ahilawat. Ahlawat? Great. Hello. Shall we start, Sunil sir? Yeah, yeah, surely, surely, please. Yeah. Okay. Before going into the detailed training, actually, we would like to introduce the all users that where to download the manuals and actually read the manuals to get better out of the drone. So actually, when you the drone is powered by the iDroneum software. So when you go to the idroneum.com, you will see the resources and resources you have to choose your products, access manuals, and all the manuals and tutorials are listed here for the better understanding. Okay, so you can download or use any manual whichever you want to read, and before flying the drone, it is mandatory for all users to
at least read all the documents before proceeding with the flights. So the manuals are detailed manuals, and they kind of complete they covers the complete about the drone except the developer APIs, and you will see everything in a well mannered and before. And again, this is mandatory to be read by all the users before connecting to the drone, before getting started with the drone. So initially, we will start with the drone specifications. The drone that comes to your lab, what does it supports and what does it not. So we will go in the menu in the index. We will go to the aircraft. You will see a aircraft diagram, aircraft technical specification at page number 11, and we will go to the page number 11 and see the drone specification. So the drone you get is actually equipped with many sensors, considering the GPS, compass, IMUs, barometers, and vision system, forward facing vision, 360-degree vision systems, and the downward facing vision system, and the separate camera modules for real time video streaming. It has a depth range finder at the back of the drone. We will see it in a detail. So initially, the aircraft you get is a type of quadcopter, which size to propeller center it's 470 mm, 47 centimeter, and without any external payload, including battery. It weighs around 1.3 kg. You can attach extra 500 gram to the hooks you received with the drone. The max operating altitude is 750 AMSL, mean sea level, and max altitude outdoor is 50 meter, but it is referable to your local rules and regulations. We recommended each user to go to the DGCA website. Yeah, DGCA, Digital Sky, for the aerospace. If your area covers within red zone, it is not recommendable to fly the drone. Aerospace map. This link has been mentioned in the manuals itself. So right now we are from the Chandigarh, and so we will go Chandigarh. So this is the Chandigarh. So actually right now we are at Punjab University. So around here it's a yellow zone. So it requires it's under the airport and by the nearby Air Force station. So you have to check your local rules before flying the drone, since we are not going to fly it outdoor, but we will fly it indoor, and we'll demonstrate each and every possible feature that we can do online. So this is the 50 meter is the actually safe altitude. Drone can go beyond this altitude, and you can control the drone beyond this altitude as well. But the 50 meter is the safe limit, since the most of the institute the drones reached is the first time they are ever going to fly the drone for the first time. So we recommended the safe altitude of 50 meter, unless until you are a trained pilot. So the indoor feature, drone is equipped with 360-degree obstacle avoidance system. Vision-based odometry is used to calculate the indoor position estimates. In altitude hold mode, the drone precisely it's kind of subject to the environment. It provided 10 centimeter precision, and drone support the real-time video streaming up to 720s and the saving mechanism as well. The position visualization is 2D and 3D space. So, but this is subject to the iDroneum software. If your drone is comes with a PX4 software stacks, but to comply to see the 2D and 3D maps, you need the iDroneum software, and we recommended to fly the drone using the iDroneum only. 5G feature, drone support the N78 band for captive networks. The drone that you have reached your lab is logged for only N78 band. It supports multiple bands, but only for so the captive networks supports. We only cap it to the N78 band. So the battery type is lithium ion 4 cell. It's a 4S battery. The battery capacity is 4500 mAh or 4.5 ampere hour. Battery charging and discharging cycles around 300 to 400, but the below limit is 300. And 300 is complete charging and complete discharging, means from 0 to 100% and then 100% to 0 again. So flight time is 18 minutes in a stable wind condition. So drone cruise speed is 54 km per hour outdoor and 15 km per hour indoor. These are the tested limits, but
Initially, the drone is kept below this. Once you are a trained pilot, you can request us to kind of unlock these speeds so you can use the drone at maximum speeds. GCS, you are eligible for 105G Labs, eligible for iDroneum for Enterprise. So GNSS is GPS. We support Cell 1 band, and the over the GPS we support the hovering accuracy of 2 meter, 0.1 for vision positioning estimates, and 1 meter with GNSS positioning plus barometer, and subject to the good satellite coverage. Operating temperature for this drone is 5 degree to 40 degrees Celsius, and vision operating environment. So to use the vision system in a best and regards manner, so you should fly it in an environment with non-reflective distributed surfaces with diffuse reflectivity of greater than 20%, and the drone supports the bare minimum lighting of 15 lux. So the image sensor is basically a wide angle camera which has a 1 by 2.7 inch CMOS frame, and the FOV is horizontal 160 degrees, so you can capture the more of the field in a, and the camera is controllable by the software as well from -90 to 25 degree. So this is all about the drone specifications, and we recommend you should know your drone before flying it or before operating the drone, and there are the multiple manuals that suggest the safety features, what you should do in the indoor environment, what you should do when you are attaching a payload to the drone, and what you need to do if there is a discrepancy during the flight. All these manuals are listed in the iDroneum. You should select your Superna 5G drone, and right now we will going to look the drone in a 3D so that we will kind of relate our actual drone to the where the sensor placements has been taken place. So this is the drone that you get in your lab. So it has a quadcopter. So the top sensor. Just give me a second. So this top sensor. This top sensor is a 360-degree vision sensor, and drone is equipped with the two vision sensor. One is this 360 degree, and the bottom one, this one, the downward facing, is basically for downward facing vision system. At the back of the drone, you will see two lenses keeping the eye downward. So this is the range finder. This is a maximum limit of 12 meters, so you can get the centimeter level accuracy while hovering at a certain height up to 12 meters. Then above the 12 meters, drone will use its barometer to maintain its altitude. At the back of the drone, you will see a SIM card slot at the back of the drone where you can insert or remove your SIM card, but we prefer to, once the SIM card is inserted into the drone, do not remove it for the better. And if you are going to remove it, please remove the battery. This is the battery holder at the top of the drone, so you need to first insert the battery and press this side to the down to connect the battery properly. Now from the forward, this is the camera. This is the camera. You can control it pitch up and down. This is a 160-degree FOV camera, and most of the sensors are included in the flight sticks and are inside the drone. Like the drone has two IMUs for redundancies, two barometer, and three compass. The GPS is not visible in this 3D model, but it's mounted on this arm, top right arm, keeping the drone front the other way. The GPS is mounted here, and one external compass for the fallback is mounted on this other arm. So this is all about the drone technical details and how the sensor placement is taking place. So now we will go and move toward we have introduction to the Superna 5G, and we have the component placement. Now going to the brief, we will see the software installation, how to, most of the labs has kind of activated their subscriptions for the iDroneum for Enterprise, but in case you are left behind, so please go and visit the iDroneum.com. I will log out this, and we'll get started. And you have to select continue with enterprise. Since your subscription is iDroneum Enterprise, so you have to continue with your enterprise. Then you have to fill out your email address in which you are going to use for your 5G. This email address is going to used for communication purpose to send the updates and much more. So please, this email address need to be verified by your organization. So once we send code, this is OTP based registration. Once we receive the OP, we need to enter it here.
So I have received my OTP, and once you will verify, so if you are a new user and not the first time your organization is not registered, you will see a organization registration page and then a user following by a user registration page. If and you will land to this dashboard. In the buy plan, go to the buy plan table at the left side. You have to activate the 5G plan. Since the my subscription is active, so I'm okay. And you will go to the dashboard and click generate app token, and you have to select your 5G lab and you have to generate a token. The token will appear look like this. You can copy it from here, or you can just reload the page and go to the app tokens. All the tokens will be available here, and the devices you are attached to them. So I have already installed, and then go to the install Hydronum and you can choose your version OS. Initially, if you are a first flyer, we recommend Hydronum for Windows. First, get a hands-on experience with the Windows, because Windows is more stable. Linux supports some developer keys and developer APIs as well. So for the beer user, we recommended Windows if you are going to fly it for the first time and you are never fly the drone before. So once you are download the Hydronum for Enterprise, you click the button and the downloading will start. Hydronum for Enterprise. Once this install, you can install this setup, and this app will look like this when you press the Windows button and press Hydronum Enterprise. So this button will look like this. And this is the system how it look like. We have an incorrect date match. We may need to open the software again. Once everything is good, you are redirected to create profile. So in your organization, you have up to, you can connect up to 4 different devices, but in a for a particular 5G lab, but you can create as many as profile you want for to segregate your data from the different user. If you collect a data, it will remains in the AA profile. If you collect some other if some other user like using your system collects the data, it will remains in the other profile. I will create a profile here and it will select username. I will select 5G lab and 5G lab full name. I will add profile, then the profile will visible to me this here, and these are 2 different profile. And this is the declaration before you flying the drone. You accept the risk attached to the drone, because drone is a flying body, so you need to agree with your local DGCA, local and the national DGCA rules and mandatory review of documentation, that the document we have provided, you read the safety manuals, you read the safety guidelines, and you need the operation manuals. User certifications, you have at least 1 trained pilot before flying it in a public space. Acknowledge, and you are acknowledged to this responsibility. Once agree and continue to fly, you will land to this the dashboard. You can add your vehicle here. Since in a private 5G, your drone is identified by a SIM card that has been provided by your vendor to you. Once you insert the SIM card, this SIM card is allotted a specific and unique ID, that is IP in a particular and a private 5G network. So once you get the IP, you can add as many as vehicle you want. So initially just we have the drones with legacy support. So you can set it over 5G dash lab dash drone, and you can add the IP that your SIM card has allotted during your initialization with 5G network. So right now I'm adding the Wi-Fi ID, but we'll demonstrate how to add the 5G ID in a separate system. Your vehicles will appear here, 5G lab drone. In case like in my lab, I have got the 5G lab SIM card drone. To identify that this is the SIM card IPN 10.45.0.1112. So you can add this vehicle as well. Once you have drones, you can connect to them pressing the connect button. Right now I'm not attached, I'm not connecting to the actual drone, so in we will demonstrate you in a little while. So this is up to the software. You can log out and choose the another profile for the AA, accept the terms and conditions. Since this profile has no vehicle,
and your vehicles will appear here, your flying history will appear here, your videos will appear here for a successful flights. So these are the kind of lab videos. You can play these videos after the flight is successful. So these are basically during the setup. These are the videos of ours during the setup, and this is the long video. You can, in case you want to retrieve data. If you want to download this video and want to process this offboard, then we have to press the download button and we will download it into your, and select the folder you want to download this video, and in the download you will see this video. Again, minimize this, exit the software, and I will just go where I have downloaded the videos. So this has been downloaded here. You can play this with any video player. So you can use this video to stream, use it for your research purpose, or any even for your use labs or use cases. So this is the software installation, software validation, and the software setup. Now I will request Sunil sir to provide the presentation rights to the Karthik Pathak so that we can demonstrate the real drone. Sunil sir, please provide the presentation right for Karthik Pathak. Yeah, sure, sure. कार्तिक लोग ने लोग का हो गया नो नो कार्तिक is yeah Karthik is on sir. Yeah, madam, can you just give the rights to Karthik Padak? Sunil, to whom? To Karthik Padak. Hello. Is my screen visible? Yeah. So, continuing on the drone live demo part. So we have a drone here, which we have inserted the battery to, and my system is connected to the 5G via the Ethernet, as you can see on the symbol here. So here we can see there are so we have inserted the battery and we are waiting for the drone latch request from the drone. And on the right hand side we have the 5G course AMF and SMF nodes. So
Karthik, you are not audible actually. So there is a technical error. There is a small delay in the technical issue, and we'll connect in another 5 minutes, please. I think Karthik mic is not working, so he is restarting the system right now.
Yeah, Karthik, you can start. Yeah. So, as we last time, we had inserted the battery and drone has attached to the 5G as it can be seen in the logs here. So the drone IP is 10.45.0.3. So this IP will be inserted into the iDrone software, and in the vehicles you will be seeing the IP and the name which you whatever you want you can add. So we will connect, and the drone is connected, and so here's the screen, and now we will be flying the drone. So for flying the drone, first of all you have to turn off the safety, and there is a green tick that will come. So is the screen visible? Hello. Yeah, it is visible now. Now it is visible. So the drone is flying and it's creating the 3D map as much as point is getting, and you can have the real-time video streaming. Actually, Karthik is flying the drone, so I'm explaining what's happening. So in the video, you will see the drone is flying, and I will maximize the video. So I will maximize the video. So this is the visuals from the drone. So you are actually getting right now, and I'm moving the hands up and down here. So drone is moving back and forward. So Karthik is controlling the drone over the 5G, and so the lines you are using on this thing actually the obstacle distance. So when I'm going to near the drone and actually trying to move, so you will see this front as a red, and the drone will try to avoid me. It is a safety feature, so do not try to do it in a flying state. So at first I have kind of considering myself as an obstacle from the front side. So drone is trying to avoid me to the back, and when I'm going back to the drone and trying to consider as an obstacle, so drone is moving a huge distance from me. So this is a safety feature. Please ensure that there is enough available space for the drone to move to avoid the obstacles. So now I will Karthik will press the land button and the drone will land. So this is the landing sequence. Once you press the landing button, so drone will automatically land. Uh, hide, hide it all. So this is actually the land button at the bottom, and you can change the mode to the loiter pilot control mode and the land mode. And this is the indoor flight, and the drone gets the kind of obvious point, kind of points with confidence to plot the things in the indoor environment. So these are the movements. The blue lines are actually the movements, and this is the 3D map. So I will now explain how we set up this environment. So actually, this is a pretty big lab.
Karthik, more options. Take. Sunil sir, can you please provide me the presentation rights? Yeah, sure. Madam, for Anup, sharing rights, please. Sunil, to whom? Anup. Anup, you are not audible actually. Okay. Sorry, sir. Sorry. Uh, so actually, this is the from where we have left. So this is a pretty big lab we have set up. Sir, am I audible right now? Yeah, you are audible. Okay. So this is an enough big lab for the drone to fly it. So actually we have placed the drone at the center of the lab. So in case we are going to demonstrate you the obstacle avoidance, so drone has enough space to move in the direction to avoid and to ensure the safety. So at the top of the software, this is the telemetry panel, and you are going to see the drone telemetry. Like this icon is same as this icon. So drone is in land mode, and when you press any of this like icon, you will see the brief message what this mode is all about. And this is a ready to fly mode. It is a gross, so drone is not ready to fly. And this is the altitude, relative altitude from where you have placed the drone. And this is the speed of the drone. This is the battery. So as you have a 4 cell battery in the drone, so it is a maximum 16.8 and minimum is around 12.5. Drone has zero satellites. So right now we have exercised the GPS denied navigation and GPS denied flight. Once you have the satellite, you will see the compass and the satellite heading at this icon. And this is the drone HUT status. The drone is tilted at what amount to which direction. Then we have the arming button, loiter button, or land button. So these are button as well as map to the joysticks. So read the manuals to see which button is mapped to the joysticks. Then we have the more options. So more option is all about how you configure your drone for its particular various behaviors. So at first for the indoor mode, we see a more option. So for the general flight mode, this is a 3D render quality. If your system is a high specs, you can make this map looks more realistic as compared to the 3D. Then this is the 3D. You will see this drone, actual drone, placing in the side of the lab. Then these are the reboot the drone. In case you have changed some parameters, you have to ensure the drone need to be rebooted. Then calibrate level. In case you ensure that after a long flight of 1 2 year of usage, drone is tilted to one side, then you can place the drone on a leveled surface and press the calibrate level. This is the virtual safety button. So what it does, unless until you turn the safety off, drone will not fly. So it is saying me message that hardware safety switch. So it's saying that safety switch is not okay. So this button is the most important button while you are ensuring or going to operate the drone. It is a reverse mechanism, but like a gun. Once you have a safety on, so gun will not fire. If you have the safety off, so gun will fire. So same like the drone. Once the safety off, then only you are able to rotate the propellers. And in case for your research purpose, you don't want to bulk your data of this
3D map, you can stop the map and use the other data, because the drone map data is around 40 to 45 mbps per second, or 40 to 50 mbps. So it's a bulkier data. So in any case, during your use case development, you want to stop this map, so you can save the bandwidth while working on a multiple devices in your lab. So you can stop the 3D map, and drone map will stop displaying you, but in the inside the drone is still forming its 3D map. These are the flight mode. Right now there are no additional modes. All the modes will appear here at the bottom of the screen, or this is the command panel. Environment, you can switch to the indoor or outdoor suitable to your environment, but there are the specific parameters that you need to ensure before considering the environment change. Environment can only be changed when drone is on the land. While you are flying the drone, it will not be able to change the environment. Then compass, drone is equipped with three compass. Initially, only one compass is used at a time, only a time of anomaly. Then the compass allotment changed. You can calibrate the compass, or you can cancel the compass calibration. This is only used, and you need to only calibrate the compass if you are flying the drone outdoor, and if you have changed the location by more than 10 kilometers. Like you have last calibrated your drone at a location A, and now you have moved to the location B, and now the difference between the two location is more than 5 to 10 kilometers, then you have to calibrate the drone. The calibrate compass is very easy, like your mobile phone. You have to just place the drone on your land, press the calibrate compass button, and just move the drone in an infinity shape. Like you have to make the 8 in the air. Once this is 100%, then the drone will make a beep sound and the calibration is done. You can cancel the calibration, and we recommend user to calibrate the compass in the environment where external magnetic field do not play any role. Then fencing, your Superna drone support fencing, and you can fence the environment around you to make the drone do not breach that. But you have to, once you can upload the fence at any time, but you have to enable this parameter to make the drone follow the fencing. Now fence action. So what action should be taken if the fence is breached? If you are flying the drone and it breached the boundary that you have set, what will the drone will do? So if you set it to reports only, then drone will only then the GCS will make a sound, fence breached, fence breach. And if you make it to RTL, then the drone will return to its launch position. Since you have to draw the fencing on the map, I will demonstrate it you to on the actual map. But right now, I will just giving a glimpse of how the fence work. So fence breach altitude is the height. You can draw the fence on the map, as well as you can make the fencing altitude. Like drone will never cross 12 meters. You can make it to 10 meters for your safety. You can make it to 30 meters for your safety, depending upon the environment or depending upon the location that you have flown. You are going to fly in, like you are in a yellow zone where the maximum permissible altitude is around 10 meter above above ground level. Then you have to type the 10 meter and wait for the tick to upload it to the drone. Avoidance, as we demonstrated during the flight, the avoidance parameter, as the drone avoidance is on, so drone will try to make a safe distance around 1.5 meter from its obstacles. And again, we are ensuring that there are enough space for the drone to move in the other direction. Path planning is not supported in Superna. Visual path planning is not supported in the Superna, but the map path planning is supported in the Superna, and I will demonstrate the same to you later. Failsafe. So what will drone do? What a safest action? What will be taken in case drone is failsafing any of these parameters? Ground station failsafe. You have disconnected from the drone. What will do? So drone, right now I am set it to the RTL. So drone will do return to launch sequence. Low battery failsafe. What will the drone will do when the battery is running low? It will return to launch site or will land. For the indoor, these both are land. For outdoor, these both will be RTL. Failsafe altitude. When this RTL sequence is launching, at maximum height, the drone will reach before
making it return to home. So like if you are flying at a 8 meter and I have set the failsafe altitude 15 meter, so drone will first climb to the 15 meter and then back to the launch site. So these parameters are very extensive and it's referable to the pilots only who understand the location where the drone is going to fly. I am not able to set these parameters for you from this lab. I will be able to set these parameters only for me. Maybe at a location you are in a red zone where the permissible altitude is 0. So you are not going to fly it outdoor. So for the indoor you have to make this both land, and these parameters has been listed in your training document as well as in your manuals. And RTL failsafe altitude will not provide any role if both the failsafe are land. Then the joysticks, what buttons of the joysticks are mapped to whom. So if you make a left joystick to the down and press A button, drone will arm, and the section is same as this button, arm button. Just lend left sticks plus B button, then the drone will disarm. So this is the only say emergency stop button, and this can only be used by the pilot in an emergency situation. When you do this sequence, drone will automatically disable its motor, and it's a mandatory sequence as per the DGCA guideline. So do not use in unnecessary situations, only when emergency is critical. Land mode X, if you press the X button, drone will automatically land mode and will able to land. Change your mode to the loiter mode, change mode your to the loiter mode, and press X button to change your drone to the land. Right button is guided mode. Guided mode is not available in the indoor. Left out, zoom in, zoom out, depending upon your camera configuration. You can make the gimbal up and down. If I press the Control L button on my keyboard, it will make my drone look down, perpendicular look down. If you are making a, and then you have to press this home button to reset its home coordinate. So your software supports camera control as well as joystick control. So you can perform these both action by using the gimbal up and gimbal down button. These are the yaw alignments, change altitude, and drone pitch. Logger is not useful for you unless until you are a developer. It will fetch the flight logs of the drone, and right now it's also making its log, so it's a log 7. And then the kill motor sequence. This kill motor sequence is same as this left plus B disarm button. These both will do the same work. Kill motor, activating the kill motor will immediately stop all motors, causing the drone to lose power and potentially crash. This action should be used in emergency situations where continued flight poses a significant risk to the people, property, or drone itself. How to kill? Press A, B, C in sequence. A, B, C in sequence. I will demonstrate this to you. First, since it's not ready to fly, so first we have to make the drone flight. Before making the drone flight, we will check all the parameters for indoor environment. Go to the avoidance is on, this is good, fail safe, both are land. And then compass, we don't require compass. Fencing, for indoor fencing is disabled, so you can disable the fencing. Compass is not required, environment set to indoor. And now we have to change, drone mode is not arbable, so you have to switch to the pilot control mode. So this is the loiter mode, and I have to press the safety on. Once everything is okay, drone grabs its position from the 3D map. We have to see, is the map okay? Drone map is okay as per the location. We got the green tick. Drone is ready to fly, and I will press the arm button and go to the kill motor A, B, C. So it will stop the propellers. I will demonstrate it again since we are on a low screen. So these propellers are visible to you at the top right. So when I press the arm button, these will start rotating. See, these are start rotating, and arm button is green to kill the motor. Y, B, C. This will stop the, okay, and you will receive a message in the notification. Maybe not. So this is the safety sequence, and these all parameters that I have discussed is totally for indoor flights, and for outdoor flight you have to enable the fence
obstacle can be turned on or off depending on your situation. And please see that drone vision system or obstacle avoidance system is affected by strong direct sunlight. So do not fly the drone when obstacle is on and the direct sunlight or heavy sunlight more than 50,000 lux, which is a more than a direct bright sunlight. It can make the human exposure can be harmful for a long time. And the same for the drone vision system as well. Do not face the drone directly to the sun or directly sunlight to avoid the damage to the vision system. The drone vision system is same like the human eyes. It sees the things, it judges the things, and it calculates the systems. And now the drone is on a floor. We go to the more option, environment, and switch the mode to the outdoor. So you will be able to see the maps, satellite maps of the system. I will click it to the OSM maps. Just a second. Okay, since we have a drone sensor configured for indoor environment, so its need position estimate right now in indoor and outdoor environment, it's looking for a position from the GPS. Right now we are not in outdoor environment, so GPS is not available. So GPS location is 00 by default, and it's on the some ocean. Once you have a valid GPS fix, so it will show you to the where you actually place the drone. So right now I'm going to demonstrate you how to upload the fence, how to upload the mission, and how to trigger the mission from the drone itself. So these are the command panel. Right now you will see we have got more options for the drone to command. We have a return to launch button, we have a land button, we have a auto mode, and we have the guided mode. And we have the change in option from the control panel, more option as well, like flight mode, obstacles, compass, and everything. Most of the same, but map quality is stop 3D map, and the map quality is not visible. So you can click on the map. You have to update your iDroneum software, and you can click on the map. Right click. You can right click on the map. Right now I'm clicking on the map, and once the drone is on the air, you can press the fly to here button, and you will be redirected to the iDroneum software or iDroneum altitude selector. You can select the altitude at which the drone will take or fly to that position. To It's a totally autonomous task. It doesn't require human intervention. Just pilot need to provide the fly to here. Just click on the map. You will show fly to here. So drone will move from here to this point. Excuse And me, sir. yes, sir. Sir, how in I don't know how we went to the map. I'm not able to do that. I was following you for a little while, but Okay, okay. So okay, no problem, sir. There are the more option. This more option button. yes, Initially, all the drones that you have received was configured with indoor mode. So this is the interface you are looking more. So just go to the more option, go to the environment, and yeah, switch it to the outdoor. okay, So you will see the map. You need to download the map first. Okay. So you can see we have the OpenStreetMap. So OpenStreetMap for cycling, iDroneum Maps. iDroneum Maps is only available for Punjab University and not for the others. So right now iDroneum Maps is basically a high quality drone maps up to the 25 zoom levels, but they are available only for Punjab University. And OSM Cycle Map, these are the more textured map and more detailed map. So I'm switching to the OSM map. This is the button at the top right corner. When you hover the button, it will display the menus. And these in the top bottom corner, they are the altitude selector button. So this is the altitude selector button. You can configure before fly to here. You can configure your altitude from here itself. Now again, right, we are actually demonstrating the fencing action. So right click on the map, create fence, and place 4 point on the map that you want to. The drone will never go beyond this boundary. You can adjust this path as well. Okay. So you can make any polygon, any multiple polygon. This is the fourth point. Any polygon you want or any shape you want
to mark the fence. At the bottom corner, you will see the upload fence button. Once the upload fence button is okay, you can read the fence. And this is the purple cycle that demonstrates your boundary. So drone will never go beyond this boundary unless until you turned off the fencing. So now I am disabled, so drone will not act anything for this purple boundary. But once when I enable the fence and fence section described as RTL or land, so when the drone when this yellow icon breach this violet boundary, so drone will return to its launch position or the position where the drone has taken off. This is the fencing for the flight path. Create flight plan. You can create 1, 2, 3, 4, 5, 6. At the fifth point, I want it to the return home, and you can upload the button and you can demonstrate your flight plan. If you think there are multiple items on the map, you can clear the map. Okay, and you can read flight plan again. Create flight plan. Create a spread grid is generally for the people who want to generate kind of regular shapes. Like I want to have my grid lines at 10 points with an altitude of 45, and I will generate. So it will generate a rectangular grids, so that you need not to mark as much as those points, and you can press upload button to upload the task. For fencing, you have to look for this fencing button. It need to be enabled to drone behave on the fence breach. For indoor, it need to be disabled. Drone will provide a notification if it is enabled and you are in an indoor mode. So it will show the fencing require global position. So it will say this kind of messages. So right now need position estimate, no GPS, so no position for the outdoor mode, but for the indoor mode. And this is all about the software. This is all about your first flight, and this thing marks your safe flight. But again, since we are the manufacturer of the drone, so we understand more of the software, more of the drone. But if you are a first flyer, again, please consider your safety and please stick to the manuals. If there is any problem, we are always available via mail or via WhatsApp, and there is no problem at reaching to us. Sir, You can, yes, sir. so while creating fence, how to escape from the whenever I do a right click, there's a button. So I'm not able to get out of that loop. Like when I create a 4 points in within Create the map, fence 1, 2, 3, 4. You can then just press this cross button. okay, which would clear fence. 1, 2, 3, 4. This cross Cross. button. This Yeah, removes the fence, yeah. This removes the fence. but I'm not able to. Yeah. How to retain that fence? Like Okay, okay, okay. How to retain that fence? Click on the map, right click, and there is a bottom second option, read fence. okay, read fence. No, nothing happens. Have you uploaded the do with me? I Click just on the right click, create fence, yeah, mark 4 point around the drone, yeah, and press upload fence. okay, And then click on the map, right click, and then press read fence. okay, got it. Okay, okay, no problem, sir. Thank you. And right now we are going to deep dive into the more of the drone developer side, so that the users in this meeting get to know more about the drone and how they can, if they want to deep dive into the developer side of the drone and want to see the raw messages, the bytes 0101 or the hexadecimals protocols we are following for this drone. So you will see. So right now I'm closing this drone because we no longer, and we are removing the battery because since it's too long we have inserted the battery, and we have taken the flight. We will exit the vehicle, then close this software. This is all about the software and the flying. Right now I'm removing the battery from the drone. So for the developer, I will move to the developer documents. This is UAV system architecture. Uh, is this document visible to you? Yes, yes, it is visible. Okay. Yeah, yeah.
So this documents is very kind of a developer side of documents and deploys all the feature that we have internally used to make this drone, or how the intersystems are connected to the each other. So like if somebody from the team don't want to fly the drone but want to get the AI or no other overviews for the drone, so they get deep dive into that particular component and need not to know about the entire drone. So this document illustrate you all the connection that happens virtually or softwarely or hardware inside the drone. So the components have been distributed in some kind of the softwares that actually drives the hardware abstraction layer, and the software that actually are off board, basically your system, your laptop, or GCS, a ground control station, or any kind of system that you are going to try to control the drone or see what the drone is doing right now, like we have seen in the iDroneum software. Then there are the system software that takes data from some particular sensor, calculate its usefulness, and then supply the data to the user or to other components where the particular work need to be done. And the main part is a flight controller that actually manage the flights. So it has been connected to the motors via PWM or CAN. Right now we are using the PWM D-Shot 600. And then we have the sensors, distance sensors, IMUs, barometer, GPS, and flow meters. Flow is just nothing but a downward facing vision system. Then the payload, a camera. We are seeing a electrical payload, basically a camera. And then we have the drone is have a two interfaces. One is a 5G and then is a Wi-Fi modem. So right now when I'm going to the dyno, so you will see your serial number, drone serial number, as a SSID of the drone. So that demonstrate you the drone is successfully implementing its Wi-Fi interface. And when you are connecting over the 5G, inserted a SIM card, you will able to see the IP in your 5G network. So it means that drone is successfully connected over the 5G. These both are supported via Mavlink. So you are able to, the iDroneum software is totally implementation of the Mavlink. There are multiple open source software that supports Mavlink, but for the enterprise users, we have the iDroneum. These flight controllers take multiple data from the sensors and calculates its positions, and then provide a stable flight to the entire system. This is the talk about the flight controller and communication with the GCS. Then we have the companion computer. Companion computer and the flight controller are connected serially to each other so that they know each other what is going between them. And we again uses the Mavlink protocol to communicate between them. Like flight controller is not a very strong kind of computer to calculate vision position estimate using the image data. So we have a mission computer or a onboard computer that actually take images or take the flow or take the vision inputs from the sensors that are very high end sensor, then calculate its position and then communicate with the flight controller via Mavlink message. So the flight controller can only behave as a can work or look only into the stable flights and need not to do the extra calculation that is make for the upward higher end systems. So when you are going to comparison, the flight controller is a 420 megahertz system, while the onboard computer is about a gigahertz computer, and it has four core, 4 GB RAM, while the on flight controller having around 256 MB of RAM. Then here the radio, telemetry or LTE or 5G, we are then connecting to the iDroneum core, then to the iDroneum and then MEC server. Its application can be vast, and the inside system of the mission computer that avoids the collision avoidance, collision prevention, safe landing, and the visual inertial odometry, the vision system that we have discussed earlier. The drone has a middleware, the middleware that parse this Mavlink packets from flight controller to the mission computer, so that we only look for the higher level application. And the drivers, if mission computer right now do not drive any hardware, but just only one system, which is a camera up and down is controlled by the mission computer and not by the flight computer. So those high level tasks are assigned to the mission computer. So you have a buffer on both the computers so that you can do your further development depending on the available spaces. You can further attach another mission computer to this system
and communicating via Mavlink. First, you can make another system to communicate with this mission computer via a particular protocol, then this to this via Mavlink. So right now we have uploaded a mission. We have uploaded a fence because actually fence is a mission to the flight controller, and we have uploaded a mission, but in the backward layer, in the low level layer, it is not pressing the button here and there. Is actually a proper protocol that sends the proper upload of the mission to the drone. So discussing first, we will discuss the how the mission upload is taking into the consideration. So these are the flight plans protocol, how the flight plan. So you can write your Python code, you can write your C++ code following this architecture, so that you can able to make a flight plan uploader by your own, and that should also work with our drone. So first we have to send the mav command that we want to upload a mission to the drone with this particular set of commands, what waypoint need to do at what waypoint. So when you will change the speed at this particular waypoint, so you have to form a command that first tell the drone that we want to upload a mission to you, then the drone will acknowledge you that now send me the first item, which is a mission item, and then mission item it will go further messages like what command do you want to do with this particular point, what are the let, long, and x, y, and z of that point, and if you want to do particular things at when I reach to that. So when you form this particular command and send this to the drone, you will be able to write your own mission uploader to the drone. So this is a very low level implementation how the system is working behind the drone, how we are able to successful upload the mission, retrieve the mission, how we are able to get the drone ID, and these are the very basic count when you are downloading a mission. So GCS first send a mission count to the drone, then drone will respond, I have a 10 items for the mission item. Then you GCS or iDrone or your own custom mission uploader send me the zeroth item, and I will count it unto the n minus 1. When I got entire item, I will load them on the user interface to show that we have this plan and make the things interactive. So these protocols has been written into the UAV system architecture as well as into your training document, so that in any case, in any point of development, you want to write your own custom mission uploader or want to interact with the drone individual system, not the entire drone as a web. So this document is a very brief code, and we have provided a source code for the mission CPP since we are supporting mailing messages. So the C++ codes are always there to write your own. You can port it to another language like JavaScript, Python, Rust, Go, whichever you prefer. And then we have how the drone fits into the entire 5G lab architecture. So the drone is a UE, basically a user equipment, and then drone is capturing data. Then we have a radios. Then the drone is sending data to the radios. Then these layers are connecting to the core. Then these cores can distribute data to like an AI ML layer, data analysis layer, and other detection layer or the survey layer, depending upon the use case. So this is the how drone fits into your lab. So this is all about from our side, like including the drone flights, drone setup, drone system, and I think this is the far enough to take your first flight. But please consider your safety. Do not fly it in an unknown environment at first. Fly it in an environment that you know you have a control to, and enough big to see the obstacles, enough big to move the drones here and there. So this is from our side, and if anyone has any question, so please write in the chat, or you can direct unmute yourself to ask. Hmm. Naveen sir, I think I have done from my side. That is all about this drone training side.
So now any query related to drone can be asked in the public chat or directly. Any configuration issue, anything related to drone can be asked here. If anyone facing issues related to drone can also Uh, be addressed here. we have everything related to contact us at the end of the manuals as well, and like I will show you. So every manuals has our contact us details at the end of the document, and you can directly reach us to the via any of the medium. You can write us to sales at the rate idronum, director at the rate mentosa.com, and these are the possible medium that we support right now. And your feedback is valuable to us. And regarding any configuration, just do not make a mistakes. If you have any queries or configuration issue, just let us know first, and we will directly help you to make your drone flight safer and stable. So every manual of us has our contact us detail. At the end, I will drop this contact email in the public chat as well, so that if you want to reach out to us. Thank you, Naveen sir. Thank you, Sunil sir. Thank you, Anup. Thank you, sir. Yeah. Now the next session is for AR VR. So please give the rights to Naveen. Madam, Naveen को rights है ना? So this session is related to AR VR device. Actually, there is there here we can see that configuration part and that what are the specifications in the particular device. So we will connect our device to the screen and we will show you how it will can be achieved from yeah. Even those who are this AR DS they can also use this, and parallelly you can check that how it works, how we can show these device information. And again there are those applications we are installed in this system that also we can access from here and we can show. So this device can be connected through a USB port, and if you want to install any of the application, so it will once when it is connected, we can show that Anjana lens in the left side of your window that after the COD drive when you are connecting through that Windows PC. So after that, you can install that particular application and you can install it. Uh,
So we are connecting our device to that laptop also, and इसमें नहीं आ रहा. This is almost a practical session only, because how to use this application that you have to already demonstrated at that UAT time, again the installation time also. Now even we are connecting this device to our laptop, and we are showing that screen to you, how it will work, how where you have to click, what are the things available in that particular device.
Sunil, Naveen, your voice is not audible. Okay, okay. Now it is audible now. We next MEC. So next day we will show how the it is integrated with the MEC application. So here you can see. We are showing how it is integrated with the MEC application now. So the IP address is 10.45.199. One is MEC. Okay, this one is at our MEC application. You can see that Benares is situated in the town of Benalmádena in the province of Malaga, Spain. It is the largest monument in the world dedicated to the life of Christopher Columbus and his discovery of the Americas. Covering an area of 1,500 meters, this intricately built ode to Columbus was designed by Dr. Esteban Martin Martin, who was a medical practitioner. Had a lifelong fascination with Columbus, who even though he was an Italian, we're going to take you on a journey through the solar system, which comprises the Sun, 8 planets, 173 known moons, 5 dwarf planets, and many other smaller celestial bodies. We'll start our journey from Neptune, the farthest planet from the Sun. We're flying a new generation spacecraft, which can reach incredible speeds. Lift off in 3, 2, 1. And here is Neptune, a gas giant discovered in the mid-19th century. It is the 8th and the farthest planet from the Sun. The most unique features of Neptune are its great dark spots. These are actually huge storm systems that form and disperse over time. Due to the great distance from the Sun, we're able to access the camera also from this Anjana lens. So now we are access the Sparsh camera from this device. You can see the streaming and all from here.
The camera is connected to 5G. That is the IP address. It is showing 10.45.0.19. Yeah. So it is all about this device. It is only on operational thing only. I mean, there is a query related to Mr. Ikram Khan. He's asking about how to connect that AR VR with a laptop or mobile. It is very easy, sir. There is a USB port is there. When you are connecting your device to your laptop through a USB, it will show in the left side of your window that Anjana lens it is will show, and you can click on that particular Anjana lens. Then you will get that full access to. Like you when you are connecting your mobile or something to your laptop, same way it will be shown there. Uh, Ajay, either take over. We'll try to demonstrate that in physically. Connect करो उसमें. Connect करके दिखा दो उसमें. ये वाला connect करो उसमें. USB को भी connect करके दिखा दो. Here. So USB port. We'll show you how it can be connected to that device. Insert in your laptop. This laptop. Let me connect. Yeah. Madam, can you just give the rights to screen share rights to me? I mean, Sunil. Because it's not sure. Yeah, yeah. Madam, just give me the rights to Sunil. Screen share and rights to Sunil, madam.
I think the rights is not there. Sir, we will connect you directly. I mean, we will connect you and we will help you out to how to connect that. Okay. You can connect the device with the USB port only. And when you are connecting, it will show that Anjana device in your Windows PC. From there, you can add any application over there. So that is all about our XR AR/VR device. So anything you can connect directly to us. We will help you out to how to connect that device. So meantime, we have a break now after this session. I mean, in 5 to 6, there is a query related to any problems in your system, anything related to 5G core radio or any other equipment which you are installing at your lab can be answered here. So there is a session 5 to 6 will be there. Meantime, you can text on your public chat also. We will help you out from there. Meantime, madam, can you just stop the recording because now the session is over from our side. You can stop the recording. In public chat, you can send messages. We will help you out from there. Query question and answers for that previous sessions. So here our team experts are here. I mean, for the radio team is here again. 5G core and evolution board and IoT gateway. Whatever the products we are supplied to you, you can ask any questions here. So they will support you. They will guide you. Hmm.
So then you start, a lot of things will happen over there. So our team is available. Again, I want to tell that our 5G core team is available, radio team is available, even our evolution board teams available. So I request all of you how small queries you can ask now, or you can put questions in public chat. If you are not able to answer today, you will answer tomorrow also, no issue. Again, Shubham sir, I think we can conclude no more queries come from any of the colleges, but we are open for